Good evening, everyone. Am I audible? Good evening, Yes. sir. Yes, sir. Okay, so as you guys must be knowing that I will be taking a geography class, and my name is just a second, just a second. Okay, is the screen visible to everyone? Yes, sir. Okay, so my name is Manas Ranjan Mahapatra, and I will be taking a geography class. First of all, I want to congratulate all of you for clearing the prelims, as it is not an easy job to clear the prelims, and very few people get the chance to clear the prelims and write the mains. Having said that, we also know that only clearing the prelims will only clearing the prelims is not enough. We also have to clear the subsequent stages to get into the service, right? So we need to do well in mains to get a interview call. That's why we all are here. So my job is to make you understand the Indian geography topics that is there in our syllabus, and we will try to complete this in 4 to 5 classes. Okay. And one thing that I want to say is, as we know, we have Indian geography in our main syllabus, only Indian geography and not world geography. Okay. But we also know that the topics of Indian geography, let's say the physiography or let's say the climatology, okay, these topics cannot be read in a silo. That means these are interrelated topics with the world geography part. जो concept गुड़ा अच्छी से concept, these concepts are interrelated. For example, if you do not know the concept of let's say planetary winds, Coriolis force, uh, your global circulations, tricellular models, then it would be very difficult for you to understand monsoon, right? Similarly, in physiography, if you do not know about plate tectonics, if you do not know about the convectional current theory, it will be very difficult for you to understand the topic of Indian physiography. Okay. So ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଉ ବି ଟପିକ ପଢେଇବି, ଓକେ, ଯୋଉ ବି ଟପିକ ପଢେଇବି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ସେ ଟପିକ ର କିଛି વર્લ્ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ସାଙ୍ଗରେ କନସେପ୍ଟ ରିଲେଟେଡ, କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି କନସେପ୍ଟ କିଛି ରିଲେଟେଡ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ବ୍ରିଫ ରେ ସେ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଓକେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ ମାନେ વર્લ્ଡ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢିଥିବେ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଆପଣ more or less world geography sangre acquainted thibe, because as you have cleared the first stage, so I am expecting this from you guys. ହେଲେ ବି ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ବ୍ରିଫ ରେ ସେ ଟପିକ ଡିସ୍କସ କରିଦେବି, ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଦରକାର ପଡିବ, ରାଇଟ? ସୋ I will be just discussing those topic in brief, then we'll move into our टॉपिक फॉर मेंस। सेटा फर्स्ट कथा कहर थला। तापरे आउ गोटे कथा मु कहया को चाहिबी कि मेंस पई आमे पिला कौन करंदी, बहुत अधिका पढ़ंदी आउ बहुत कम राइटिंग प्रैक्टिस ऊपर फोकस करंदी, किंतु आई एम श्योर सौरभ सर भी ए जिंस हाईलाइट करिथिबे कि राइटिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर मेंस।
तो आपण माने फोकस करिवे राइटिंग रे आउ निज थॉट प्रोसेस ब्रॉड करिया पई ट्राई करिवे सो दैट को भी टॉपिक आसिले आपण केमती मेंस रे लिखि परिवे ता पई आपण कोन करिवे मु गोटे सजेशन देबी कि अब जदि मु ज्योग्राफी पढौछि आपण कोन करिवे यूपीएससी रो जो मेन सिलेबस अछि कारण ओपीएससी मेन सिलेबस रे तो खाली तीनटा जिनस लिखि दैछन्ती फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल ज्योग्राफी तापरे आपणकर जियोफिजिकल फेनोमेना लिखि दैछन्ती सेतिकी यूपीएससी रे जो सिलेबस अछि तार आपण देखिए क्लासिफिकेशन अछि बहुत जगह रे माने से सिलेबस को फर्दर क्लासिफाई करके डिटेल रे बहुत जगह दिया आइछि कि कोन कोन पढिया कथा मो हिसाब रे आधा घंटा काढी की just try to memorize those terms, okay, those topics that are mentioned in those classified syllabus sethuru kon hobo when a question comes even if you don't know the answer you can just recall these points and write an answer तार आमे गोटे एग्जांपल देखिबा एबे तार गोटे एग्जांपल एबे देखिबा बट मु कोन कहूजी फॉर एग्जांपल लेट्स से हमरो गोटे टॉपिक फॉर एग्जांपल लेट्स से जियोमॉर्फोलॉजी ओके लेट्स से गोटे टॉपिक अछि जियोमॉर्फोलॉजी ओके जियोमॉर्फोलॉजी गोटे टॉपिक अछि तो जियोमॉर्फोलॉजी अंडर कोन कोन आस्पेरियो एनीवन Sir, Earth, interior of Earth, okay types of fine rock. interior of earth types of rocks Yes. okay types of rocks Then Then sir, volcanism. forces volcanism okay how can आस्पेरियो sir, various forces that like shape the geomorphology. okay are you talking about endogenetic and exogenetic forces Yes sir. okay fine how can आस्पेरियो Sir, different agents like glacial landforms कथा कहउचंती Sir, different landform भी regions got a point. okay landforms okay Sir, earthquake, tsunami, এটা भी paper. yes Earthquake and tsunami. okay fine earthquake tsunami ये सब आसपारिबा आ भितरे ओके फाइन तो देखंतु जियोमॉर्फोलॉजी मु एटा कोन कली हमर फॉर एग्जांपल फिजिकल ज्योग्राफी रो एटा गोटे पार्ट राइट फिजिकल ज्योग्राफी रे हमें आउरी कोन कर परिबा क्लाइमेटोलॉजी काढी परिबा राइट आपण सॉइल्स आ कोन कर परिबा सॉइल्स कर परिबा अंडर रे राइट तो फिजिकल ज्योग्राफी को हमें फर्दर डिवाइड करिकि जियोमॉर्फोलॉजी हो क्लाइमेटोलॉजी हो सॉइल्स हो हमें बहुत पार्ट डिवाइड कर परिया राइट तो मु आपन को एया कहया चाहूची कि आपण एई जिंसटा को आपण ट्राई करिवे मने रखिया ठीक अछि बेसी टाइम लागिवनी ज्योग्राफी रो मु कहिबी सिलेबस रो सब टॉपिक रो सेमति करिया पे माने सब सब्जेक्ट रो मेड बी ज्योग्राफी मेड बी एनवायरनमेंट मेड बी पॉलिटी एटा कले कोन हबो फॉर एग्जांपल जो भी क्वेश्चन आसुची इवन इफ यू डोंट नो द आंसर आपण जदी कीवर्ड्स गुडा आपण मने पड़ी जिवो आपण सेही थ्रू कोन कर परियो आंसर डिराइव करि परियो right let's see this through a question okay first ଗୋଟେ question करिया से थ्रू हम एटा को ट्राई करिया जानिया पे क्वेश्चन हला कि just a second discuss the impact of volcanic eruptions discuss the impact of volcanic eruptions on regional environment okay discuss the impact of volcanic eruptions on regional environment let's say this is your question ठीक अछि मु पढैनी टॉपिक ऑब्वियसली मे बी आपण माने किछि पिला जानिथिबे किछि पिला आर आंसर मे बी जानि नथिबे किंतु आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू
इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नेबे भूली जानतु आमे क्वेश्चन डिस्कस करने आमे देखु जे कि केमते आमे पॉइंट जनरेट कर परिया ओके तो क्वेश्चन डिमांड कोन क्वेश्चन डिमांड हला टू टेल अबाउट द इंपैक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस ऑन रीजनल एनवायरनमेंट ठीक अछि केही यार किछि आंसर कहय पय चाहि किछि पॉइंट्स के कहय पय चाहिबे इंपैक्ट कोन हबो सर लैंडफॉर्म क्रिएट करियो लैंडफॉर्म क्रिएट करियो फॉर एग्जांपल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वोल्केनिक इरप्शन जदि से बासाल्ट माने बासाल्टिक लेवा हेतो ताले ओके से बहुत दूर को जिवो जदि एसिडिक हेतो ताले से डाइक फॉर्मेशन करबो ऑन द स्पॉट तो ओके ज्योग्राफिकल डाइट लैंडफॉर्म्स क्रिएट डाइट नॉट डाइक जनरेटिव माने माने किछ गोटे ओके वर्टिकल फाइन मु बुझी गली लैंडफॉर्म गोटे okay basaltic you are talking about a basaltic landform let's say an example is our Deccan tribes okay fine how kon he periyo So climatic condition रे changes आसପାରିବ okay very good kon he periyo climatic condition रे changes volcanic eruption रे carbon dioxide generation हबो से global warming को भी enhance करिवो surrounding atmosphere भी polluted हबो okay सर से एरोसॉल भी इमिट करो जो तारा ग्लोबल माने टिके कूलिंग इफेक्ट भी आनी पारे okay aerosols okay fine cooling effect आसପାରିयो सेथुर आ kon he periyo सर लाभा जदि ब्लॉक कर दबो रिवर को सडन फ्लडिंग हे जिवो lava jodi सर लाभा जदि ब्लॉक कर दबो रिवर को तारे सडन फ्लडिंग हे जिवो okay fine it may lead to course change okay course change of river Sir, migration. which will lead to flood okay fine tapare Sir, migration of people, local people. migration of people okay fine देखो एइटा मु गोटे कथा कहबी आपण सर माइग्रेशन ऑफ पॉल्यूशन पीपल भी पारो रिवर पॉल्यूशन ओके माइग्रेशन ऑफ पीपल कहउछन ठीक अछि मु आसीबी मु से पॉइंट एट काहे लेखुनी मु सेटा किछि टाइम रे कहबी ओके आ कोन कहले पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज so यस earthquake सर भी ହେଇପାରିବ okay yes volcanic eruption itself earthquake sangere hi ase it is an integrated part because without earthquake volcanic eruption hobani for example earthquake is not earthquake का माने कौन shaking of the earth right माने जदि आपण literal meaning जिबे it is the shaking of the earth due to movement of rocks along movement of rocks along a fracture ठीक अछि तो एठी कोन होउची जतरा आपण volcanism होउची obviously there will be some shaking because of the cracks it forms ठीक अछि किंतु देखंतु मु से कहू earthquake आसीबो ठीक अछि किंतु हमरो मेन क्वेश्चन रो जो डिमांड थिला इट वाज ऑन रीजनल एनवायरनमेंट तो अर्थक्वेक आसीबा ठीक अछि बट व्हाट इंपैक्ट विल इट ब्रिंग सेटा रीजनल एनवायरनमेंट रो कोन इंपैक्ट आसो ता ऊपर हमको फोकस करैर अछि सर So, सॉइल रो earthquake फर्टिलिटी भी अफेक्ट करो सॉइल फर्टिलिटी ओके फाइन ओके एग्रीकल्चर ऊपर अफेक्ट करो ओके फाइन ठीक अछि ओके नाउ ठीक अछि मु बुझी गली आपण माने ठीक ठाक पॉइंट्स माइंड रे जनरेट कर दै छथि तो मु किछि पॉइंट कहूची तापरे आमे हम टॉपिक स्टार्ट करियो आजिरो तापरे मु जतले subsequently आउ किछि क्वेश्चंस करेबी okay then you will get to know that without knowing much about the question also you can answer it for example ए क्वेश्चन रो जदि हम देखिया ए क्वेश्चन रे थिला कि डिस्कस द impact of volcanic eruptions on regional environment ठीक अछि फॉर एग्जांपल एठी गोटे कीवर्ड हला कि आपनकर जो एनवायरनमेंट एठी गोटे कीवर्ड अछि तो एनवायरनमेंट मींस आपण फर्स्ट कोन कोन आ भीतर भाबी परिवे लैंड माने हाइड्रोलॉजी भाबंतु वाटर हाउ एयर ए तीनटा आपण जहां भी मस्ट श्योर भाबी परिवे यस और नो yes sir तो देखंतु किछि न हले भी तीनटा पॉइंट तो एटलीस्ट आपण एटू जनरेट कर परिवे किछि न हले भी आपण तीनटा पॉइंट एटलीस्ट एटू जनरेट कर परिवे राइट but we know that we can classify this further to create more points let's
start with air ठीक अछि का air रे बहुत अधिका पॉइंट बाहरियो तो आउ एथिरे एटा गोटे आपण भाबिले आउ गोटे हम पाखरे कोन अछि कि वोल्केनिक इरप्शंस राइट आउ गोटे पॉइंट अछि वोल्केनिक इरप्शंस तो गोटे सेकंड आउ गोटे अछि हमर वोल्केनिक इरप्शंस तो वोल्केनिज्म रु कोन कोन हुए टिके मते के कहि परिवे माने कोन मटेरियल रिलीज सर हुए अर्थ रे इंटीरियर रे जो मोल्टेन मटेरियल ଥାଏ ତ ସେ अर्थ ओके ओपनिंग रे से हाँ बाहर माने आसे ओके दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ वोल्केनो नॉट वोल्केनो वोल्केनिज्म हम कहूची कि वोल्केनिक इरप्शन रे कोन कोन मटेरियल हमर रिलीज हुए सर पायरोक्लास्टिक डेब्रिस बाहरे गैस बाहरे ओके सल्फर ओके ओके गैस बाहरिबो सो वाटर भी बाहरिबो ओके मोल्टेन मटेरियल बाहरिबो पायरोक्लास्टिक मटेरियल भी बाहरी परिबो ओके स्टीम गैस हेगला स्टीम हेगला ओके वाटर भी बाहरी परिबो ओके फाइन सो आउ किछि बाहरिबो जो मोल्टेन मटेरियल बाहरिबो आउ एई सब जिंसर कोन हबो किछि ऑब्वियसली किछि पॉल्यूटेंट्स भी बाहरिबो राइट किछि पॉल्यूटेंट्स भी ता संगे बाहरिबो ओके सो एई सब जिंस को हमें कंबाइन करिकि कोन कर परिबा आरो किछि न जानि कि भी गोटे आंसर हमें क्रिएट करि परिबा फॉर एग्जांपल जदि आपण एठी लेट्स से मु जेमति कहली एयर रु स्टार्ट करिया ओके एयर रु स्टार्ट करिया किंतु मु कहिबी एग्जाम रे एमति लिखिबेनी कि इंपैक्ट ऑन एयर इंपैक्ट ऑन वाटर काहे कि जदि इंपैक्ट ऑन एयर लिखिले आ ता तळे भाबंतु आपण 5-6टा पॉइंट लिखुछंती या 4टा पॉइंट लिखुछंती तो बेले बेले एमति हेई पारे कि माइंड रे आसी जाई पारे कि हां से एयर रो गोटे पॉइंट लिखिची आउ वाटर रो माने एयर एज अ सिंगल पॉइंट लिखिची मो हिसाब रे 1 1.1 1.2 एमती कले मे बी केतळे एमती हेई पारे कि लागिवो कि हां पॉइंट्स कम अछि किंतु रादर देन जो इंडिविजुअल पॉइंट को जदि आपण मेन पॉइंट करि लिखिबे सेमति आउट का अधिका पॉइंट लागिवो आपण दीटा को वे करि परिबे किंतु मो हिसाब रे जदि आपण इंडिविजुअल पॉइंट्स काढिबे बेटर हो तो किंतु हमें माइंड रे रखिथिबा कि एयर रे कोन होउची ओके ओके तो सर फर्स्ट टिके आपण गोटे भाबंतु हां कोंतु कोन कहले सर आपण जो कहले इंडिविजुअल पॉइंट को मेन पॉइंट करिया पई ताहले हेडिंग टा कमी जीवो एटा कले मु बुझी पारलेनी कोन पचारछन आपण सर जदि इंडिविजुअल पॉइंट को ही हमें मेन पॉइंट करतबा ताहले जो नॉर्मली हमें ना गोटे ना हेडिंग हेडिंग कमीबनी सेई जो इंडिविजुअल पॉइंट को ही एज हेडिंग आपण लिखि लिखि जाई परिबे ना तार निजर हेडिंग बनै परिबे आपण बुझी पार मु एबे एबे देखि दबा केमती फॉर एग्जांपल जदि हमें भाबंतु एठी एयर ऊपर फोकस करिया ठीक अछि हमें कोन जानचे आपण माइंड रे दीटा कीवर्ड आसी गला कि एनवायरनमेंट लैंड वाटर एयर रे फोकस हबो वोल्केनिक इरप्शन रे ए मटेरियल बाहरची ते इथुर मते फोकस करे अछि ठीक अछि एयर ताई हमें फर्स्ट फोकस करिया तापर देखिया ग्रीन हाउस फर्स्ट देखिया गैसेस ओके तो गैसेस रे आपण जानिथिबे कि फर्स्ट आपणकर ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हबो यस और नो यस सर ओके ग्रीन हाउस गैसेस विल बी रिलीज्ड तो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हले आपण आइदर लिखि देबे कि रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस और आ हेडिंग टाको कम कर परिबे इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग ठीक अछि इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग केमती बिकॉज इट रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेस ठीक अछि एटा आपणकर गोटे पॉइंट हे परिबो तापर कोन करि परिबे हमें जानिचे कि किछि पॉल्यूटेंट भी रिलीज होउची राइट तापर आपण कोन लिखिबे कि सेकंड पॉइंट एयर पोल्यूशन हे गला ठीक अछि एयर पोल्यूशन हे गला तो ड्यू टू पार्टिकुलेट मैटर दैट इज बीइंग रिलीज्ड टू द एयर राइट पार्टिकुलेट मैटर किछि रिलीज होउची तो ता पई कोन होबा हमर ऑब्वियसली हमर एयर पोल्यूशन ता पई होबा राइट तापर आपण कोन करि परिबे कि देखंतु एठी एयर पोल्यूशन आसला पार्टिकुलेट मैटर आसला एबे कि जणे एटा कहिथिले बोधे कि कूलिंग इफेक्ट हबो कि जणे कहिथिले कि एरोसॉल्स रु कूलिंग इफेक्ट हबो सेटा गोटे पॉइंट हे परिबो आ गोटे पॉइंट कोन हे परिबो कि इट विल अफेक्ट इंसोलेशन
केमती इनसोलेशन को केमती इंपैक्ट करिवो रिफ्लेक्ट ହେଇଯିବ ଯୋଉ एरोजोल यस द्वारा रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होबो कि गोटे जिंस देखंतु आमे कोन कले ऊपरे आमे जानिचे कि एई तीनटा ऊपर हमको फोकस करैर अछि आमे फर्स्ट एटा को धरले एइथुर धरि कि आमे एटा को धरचे आउ पॉल्यूटेंट को धरचे तापर आमे फर्दर भाबी परियो जदि आमे जानिचे एयर पॉल्यूशन रु कोन प्रॉब्लम होबो ठीक अछि आमे फर्दर भाबी परियो कि पॉल्यूटेंट अधिका हले कोन होबो इंसुलेशन इंपैक्ट होबो इंसुलेशन केमती इंपैक्ट होबो ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन राइट ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन राइट मु ज्योग्राफिकल टर्म्स कथा कहउतली कि टर्म्स आपण टिके मन रखिबे मु काहे कि आपण को टर्म्स मन रखिया पे कहउतली मु एइति पे टर्म्स मन रखिया पे कहउतली कि जेतोल से टर्म्स थिबो जेतोल किछि भी क्वेश्चन आसीबो आपण से टर्म्स गुडा भाबी जेतोल आपनकर पॉइंट जनरेट हेतिबो आउ गोटे पॉइंट फॉर एग्जांपल एटी कोन ही परियो इट विल अफेक्ट रेनफॉल केमति रेनफॉल इंपैक्ट को अफेक्ट करिवो कि इट मे इंक्रीज द रेनफॉल केमति रेनफॉल इंक्रीज करिवो के कहि परिबे सर जो पार्टिकल एक माने एटमॉस्फेयर को जीव सेगुडा दे विल फॉर्म एज ए न्यूक्लियस ऑफ द वाटर वेपर टू yes very good condensation nuclei it will act as condensation nuclei the particulate matters or the pollutant will act as condensation nuclei which will increase the rainfall हमर कोन हुए आपण पढिथिबे एटा कि जेतबळे हमर पॉल्यूटेंट अधिका हबो कि पार्टिकुलर मैटर अधिका हबो तो जो वेपर थिबो एयर ओके सेटा कोन हबो कंडेंस हबा पे ताकू सहज होबे ओके सो दैट विल इंक्रीज द रेनफॉल आउ कोन हे परिबो ओके एटा चलंतो हमें किछि सर किछि एसिड रेन भी हे परिबो कोन हे परिबो सर एसिड रेन हाँ एसिड रेन हे परिबो यस एसिड रेन हे परिबो ए पॉइंट रे आपण लिखि दे परिबो एसिड रेन भी हे परिबो वेरी गुड तापर देखंतु एटा हे गला नेक्स्ट आपण कोन करिवे चलंतो हमें टिके एबे लैंड आडू को जिबा नेक्स्ट आपण लैंड रे कोन होबो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मे लीड टू destruction of forests due to hot lava yes or no हबो कि नहीं जदी हॉट लावा जोटा आपणकर द लावा व्हिच इज यूजिंग आउट इट मे डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट तापर कोन हबो मेल्टिंग ऑफ स्नो हाँ गोटे जिनस मोर टिके देह भल नहीं तो जदि मो टोन रे किछि प्रॉब्लम अछि कि टिके मझिरे कास होउजी तो प्लीज एक्सक्यूज कर देबे मो देह टिके भल नहीं तो मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑब्वियसली देखंतु कोन हबो से रीजन रे ऑब्वियसली कोन हबो आपनकर जो टेंपरेचर अछि इंक्रीज हे जिवो सेति पई आ गुटे रीजन भी कोन हे परियो आपण जानि चंती कि एठू कोन हबो कार्बन डिपॉजिट्स आपनकर बॉडी जीवो ओके कार्बन डिपॉजिट बॉडी जीवो ड्यू टू the particulate matter and all when it will settle down the carbon deposits will increase the carbon deposits जेतबेले स्नो ऊपरे जेतबेले कार्बन एलिमेंट जेतबेले आपन को स्नो ऊपरे डिपॉजिट हबो तापर कोन हबो से जिंसडा जेतबेले सेटा डिपॉजिट हबो एल्बिडो गोटे जिंस जानिथिबे आपण एल्बिडो कोन से कहि परिबे reflecting capacity of ice yes not ice reflecting capacity of any body ठीक अछि द रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी ताको एल्बिडो कहंदी ठीक अछि तो एल्बिडो कोन होबा एल्बिडो कमी जीवो काहे कि कारण कार्बन डिपॉजिट एटा एक ब्लैक बॉडी राइट तो ता पे कोन होबा एल्बिडो कमी जीवो एल्बिडो कमी जीवो मेल्टिंग कोन होबा आउरी बॉडी जीवो यस और नो यस सर ठीक अछि हमें फर्स्ट एयर रे देखुथिले तापर हमें कोन करले लैंड रे देखिले लैंड रे हमें देखिले कि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होउची स्नो मेल्ट होउची बाकी जिंस भी बहुत किछि हबो आउ कोन हे परियो फॉर एग्जांपल लेट्स से जदि आपण बायोडायवर्सिटी फोकस करियो सेटा डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट भी आसी परियो बायोडायवर्सिटी इट मे किल एनिमल्स जदि आउ टिके बेसी इंपैक्ट देखै पे चाहिबे एंडेंजर्ड एनिमल्स लिखि दे परिबे फॉर एग्जांपल आपण जे जानिथिबे
ऑस्ट्रेलिया रे जो फायर हेतला इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ वोल्केनिज्म बट से फायर पई बहुत एंडेंजर्ड स्पीसीज इंपैक्ट हेतिले राइट तो कोउटी गोटे वोल्केनिज्म पई जदी भाव फायर फॉरेस्ट फायर हे गला किछि हला सेटा कोन हे परियो आपनकर एंडेंजर्ड एनिमल्स को इट मे पुश एंडेंजर्ड एनिमल्स टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन राइट तो से जिंस भी हेई परियो आउरी बहुत जिंस हेई परियो जेमति फॉर एग्जांपल रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस काहे कि ए जो कार्बन डिपोजिट्स जदी भाव ए कार्बन डिपोजिट्स जदी लीव्स माने कार्बन जदी लीफ ऊपर डिपोजिट हे गला जदी डिपोजिट हे जो तापर कोन ताले कोन होबो तमरो फोटोसिंथेसिस एबिलिटी कोन होबो फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी कमी जिवो राइट सो आमे कोन करि परिबा गोटे कीवर्ड रु जदी फर्स्ट आमे कोन करि परिबा आमे कीवर्ड को धरि परिबा कीवर्ड रु जेमति एठी लैंड वाटर एयर भाबिया बहुत कष्ट न आपण वोल्केनो जदी जानि चंदी सेठी कोन रिलीज होबो सेटा भी बेसी कष्ट न तापर दीटा को कंबाइन करिकि आपण कोन करि परिबे जदी ज्योग्राफी रो टर्म्स जानि चंदी कीवर्ड्स जानि चंदी आपण इजीली कोन करि परिबे सेथरु आंसर डिराइव करि परिबे हां वाटर हम किछ डिस्कस करने ऑब्वियसली आपण जानि चंदी कि वाटर पोल्यूशन होबो कंटामिनेशन हे जिवो राइट तो ए जिंसटा भी आपण आ गोटे पॉइंट करिके लिखि परिबे आउरी पॉइंट हे परिबो डिक्रीजिंग विजिबिलिटी राइट विजिबिलिटी कमी जीवो ड्यू टू एस टोपोग्राफी भी तो हाँ टोपोग्राफी चेंज हे जीवो टोपोग्राफी चेंज हे जीवो देयर वुड बी क्रैक्स ऑन द रॉक स्ट्राटा से सब भी हे परिबो राइट तो मो कहयार रीजन माने या थिला कि एग्जाम रे कोन होबो आपण जेतोले मेंस लिखिबे घरे बसी जेतोले आपण आंसर लिखिबे आउ एग्जाम रे जेतोले लिखिबे सेटा बहुत हेल एंड हेवल डिफरेंस थिबो कारण घरे जेतोले आपण लिखनी यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग आपण आराम से भाबंतु 10 मिनिट लिखुचंदी 15 मिनिट लिखुचंदी ओटा आंसर जोटा कि आपण सेठी एते टाइम मिलिबनी राइट सेठी आपण 7 मिनिट 10.5 मिनिट किंतु जदि एवरेज रे धरिबे दीटा क्वेश्चन को मो हिसाब रे 17 मिनिट पाखा बाकी आपण दीटा क्वेश्चन पे 17 मिनिट्स अछि आपण राइट तो कारण आउ बाकी टाइम वेस्ट हबो कोठी ना कोठी कि आसी सिग्नेचर करछि कोन होछि से सब रे वेस्ट हबो तो आपणको काम एबे हला जेते आपण मेंटली जेते अधिका भाबिबे राइट ऑन द टॉपिक सेटा बेटर हो आपण बहुत अधिका पढ़ी जिवे किछि लाभ होबनी जेते भाबिबे कि अच्छा ठीक अछि एटा कीवर्ड ए कीवर्ड रे कोन कोन हमें फर्दर आकु केमती आउ क्लासिफाई करि परिबा कि फर्दर आउ पॉइंट कोड जनरेट करि परिबा तो सेटा फर्स्ट जिंस कारण एग्जाम कंडीशन ना से प्रेशर कंडीशन रे बेले बेले आपण बहुत घुसी के जाईथिबे सेठी किछि मने पड़ेनी कॉन्सेप्ट्स तो भूलिबेनी कॉन्सेप्ट तो जाहाली भी आसीबो किंतु फॉर एग्जांपल जोटा आपण भाबंतु मन रखी जाइथिबे से प्रेशर रे किछि मने पड़ेनी बहुत टाइम एमति मझरे मे भी एमति होबा आपण 15-20 मिनिट ब्लैंक ही गले किछि मने पड़नी तो सेठी कोन होबो सेठी ए सब जिंस आपणकर काम आसो मु जानि छी सरस पेस्टल वगैरह से सब कहि सारी थिबे आपण को ऑब्वियसली से सब से जिंस भी काम आसीबो आ ज्योग्राफी रे जनरली पेस्टल सब जगह रे काम करेनी कारण एटा टिके अलगा हो जाय सब जगह काम करेनी किंतु आपण जदि कीवर्ड जानि चंदी आपण कोन करे सेठी आंसर जनरेट करि पारे इवन दो आपण जानि नांती किछि आ मने पड़ो ओके सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्लीज आउ ए एग्जांपल भी सेही दिपेंड प्लीज गो एंड रीड अ क्लासिफाइड सिलेबस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी ठीक अछि यूपीएससी इंडियन ज्योग्राफी नै पूरा ज्योग्राफी रो जाई कि यूपीएससी रो क्लासिफाइड सिलेबस कोठू आपण काढी कि अवेलेबल अछि इंटरनेट रे जाई कि पढिबे राइट सो सेथुर कोन होबा आपण आंसर जनरेशन बहुत सहज होई जिवो परीक्षा रे जति किछि मने भी पडुनी आपण मिनिमम मने भी पडुनी आपण 5टा पॉइंट लिखि आस परिबे हमें आगु को आउरी देखिबा क्वेश्चन जोडी सेमती हेई परियो ठीक अछि 5टा पॉइंट लिखि परिबे अब फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन 5 पॉइंट इज फाइन even if if not very good 5 point is fine okay so एइथि पई आपण कोन करंतु ए जिंसटा करंतु एटा समस्त बुझा वाला एवरीवन इज क्लियर ऑन इट Yes, sir. यस सर okay very good so let's now delve into our topic today's topic
So our today's topic, the first topic that we are going to discuss is, just a second. The first topic that we are going to discuss is the physiography. Okay, the Indian physiography. किंतु इंडियन फिजियोग्राफी पढ़ेबा आगुरु मु शॉर्टली आउ किछि जिंस भी आपनक संगे डिस्कस करिवि जेमति कि मु कहितली कि इफ देयर वुड बी समथिंग दैट इज related to world geography, then I would be discussing those topics also, right? तो एबे आमे फर्स्ट डिस्कस करिवा our topic is इंडियन फिजियोग्राफी. एटा आपनकर फिजिकल ज्योग्राफी रे आसीबो. इंडियन फिजियोग्राफी ए टॉपिक डिस्कस करे आगुरु मु किछि जिंस जोटा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी संगे रिलेटेड सेटा को एबे डिस्कस करिवि. ओके, सो the first, do you know what is continental drift? Yes, sir. Yes, कुहंतु. Sir, I think David Hayes सेटा से देइतले continental drift theory. तो से कहले कि फास्ट हमर गोटे सुपर कॉन्टिनेंट गोटे थिला गोटे मेगा ओशन थिला. तो Okay. तो तापरे सेटा माने डिवाइड है कि गोटे नॉर्थवर्ड शिफ्ट हैला गोटे साउथवर्ड शिफ्ट हैला. तापरे Okay. पुणी माने सब्सिक्वेंट डिवीजन है कि तो एबे हमर जो प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन अछि से अछि आउ से Oh. कहले कि कंटेंट आई थिंक तो यार गोटे मेजर ड्रॉबैक थिला कि कॉन्टिनेंट टा स्मूथली फ्लो करछि ओवर द ओशन. तो जोटा कि परे आई थिंक तो कॉन्ट्राडिक्ट करथि मोर जा माने अल्प अल्प जा मन पड़छ. बुझिगली. ओके, सो मु एबे जहा भी कहिबी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट मु सेति की कहिबी जेति कि हमकु हम इंडियन फिजियोग्राफी पे दरकार. मु पूरा डिटेल को जिबिन आ आपन को मेंस पे दरकार भी नहीं तो डिटेल गले टाइम वेस्ट तो सेटा मु करिबी. ओके, तो यस, यू सेड इट करेक्टली, बट एटा डेविड हेस नो, एटा अल्फ्रेड वेगनर देथिले. ठीक अछि, एटा भी हमर दरकार नहीं. मु खाली एति कहया को चाहूची कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट से कोन कहिथिले. He said that the continents that the distribution of the continent and ocean that we are seeing now was not same throughout the history. Okay, throughout the history amaro ebe jaha bhi ame continent oceanic distribution dekhute seita nathila. Okay, what he said that initially there was a supercontinent and it was known as Pangaea, and surrounding it was a super ocean that was known as Panthalassa. Okay, so he said that there was a supercontinent and a super ocean, and this continent जो Pangea thila, it broke into two parts. One was your Gondwana, उपरटा गोंडवाना थिला मु सॉरी उपरटा लॉरेसिया थिला मु गोंडवाना कर देछि, तळटा गोंडवाना हबो. ठीक अछि, इट ब्रोक इनटू टू पार्ट. वन वाज लॉरेसिया एंड द अदर वाज गोंडवाना. ठीक अछि, एटा नॉर्थ गोटे सेकंड. वन वाज योर लॉरेसिया and the other was your Gondwana, and this then further the Gondwana and Laurisia, it further broke into smaller pieces and it drifted away to form the map that we are seeing now. Okay, तो से कहले कि किछि नहीं दीटा गोटे बहुत बड़ माने इनिशियली एते गोटे कॉन्टिनेंट नथिला, गोटे सुपर कॉन्टिनेंट थिला जाको हम पैनेजिया कहउथिले. ता चारि पटे गोटे ही ओशन थिला, राइट. ता किंतु तापर कोन हला से जो पैनेजिया थिला सी भांगी गला दीटा पार्ट रे. गोटे पार्ट हला गोंडवाना, गोटे हला लॉरेसिया. आ जो भांगी गला से मझिरे कोन हला से जो सुपर ओशन थिला सी कोन कला इंक्लूड करि गला. सॉरी, से जो सुपर ओशन थिला सी कोन करला इंक्लूड करि गला. आउ सेही पार्टटा कोन हेगला आपनकर 33 सी. सेही पार्टटा आपनकर कोन हेगला 33 सी. ओके, आउ फर्दर ए जो लॉरेसिया गोंडवाना थिला ये फर्दर आउ छोट छोट पार्ट रे भांगी गला. ओके, ये फर्दर आउ छोट छोट पार्ट रे भांगी गला. तो
जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थिला एटा गोटे मेजर ब्रेक थ्रू थिला इन जियोमॉर्फोलॉजी. इट वाज अ मेजर ब्रेक थ्रू, बट एथिरे किछि किछि प्रॉब्लम थिला. ओके, से प्रॉब्लम हमें डिस्कस करबानी डिटेल रे, किंतु प्रॉब्लम जोटा थिला सेटा हला कि हमर अल्फ्रेड वेगनर, he said that the forces which led to the breaking of this supercontinent was polar fleeing force. गोटे थिला polar fleeing force, and the second one was टाइडल your tidal force. ठीक अछि. फर्स्ट वाज योर पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स. एटा हम डिटेल रे डिस्कस करबानी, एबे दरकार नै हमर. ओके, किंतु क्रिटिसिज्म यह थिला कि दिस फोर्सेस वेर टू वीक फोर्सेस टू ब्रेक दिस कॉन्टिनेंट, सॉरी, टू ब्रेक पैंजिया इनटू स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स. ओके, किंतु तापरे आउ जणे थियोरिस्ट आसिले, तांको ना थिला आर्थर होम्स. he gave the theory of convectional current theory. Okay, सी convectional current theory देले. एटा हम पई बहुत अधिका दरकार नै, खाली पासिंग बाय रेफरेंस आपण एग्जाम रे देई परिबे. ठीक अछि. convectional current theory, ए theory रे से कोन कहले, आर्थर होम्स said that in the interior of the earth, हमर जो अर्थ रे इंटीरियर अछि, let's say this is our surface, let's say this is our surface of the earth. He said in the interior of the earth there are many radioactive elements. Okay, in the interior of the earth there are many radioactive elements, and due to decay of this radioactive element, a radioactive element भितर जो interaction हबो ता decay हबो, सेथि पई कोन हबो, बहुत एनर्जी रिलीज हबो, राइट. आउ ए जो एनर्जी रिलीज हबो, ए एनर्जी कोन करिवो, ए एरिया रे बहुत अधिका हीट जनरेट करिवो, राइट. ए जो एनर्जी रिलीज हबो, ए एनर्जी कोन करिवो, ए एरिया रे बहुत बेसी हीट प्रोड्यूस करिवो, राइट. एतिक बुझाला हम कोन कहली एबे. आर्थर होम्स कोन कहउचंती, आर्थर होम्स कहउचंती हमरो इंटीरियर ऑफ द अर्थ रे कोन अछि, किछि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अछि. से रेडियो एक्टिव एलिमेंट जथे डिके हेबे, से माने कोन करिवे, बहुत हीट जनरेट करिवे, राइट. बहुत एनर्जी रिलीज हबो, से थ्रू कोन हबो, बहुत हीट प्रोड्यूस हबो. एडा बुझाला समस्त को कोन कहउची मु. यस सर. का डाउट अछि एथरे मु कोन कहउची एबे. नो सर. ओके, तो बहुत हीट कोन हबो, रिलीज हबो. तो जते हीट रिलीज हबो, आउ इटा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. एमती नै कि पूरा मेंटल पोर्शन रे आपणकर ए हीट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट अछि, बट इट इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो एबे कोन हबो, जेतबेले इट बहुत अधिका हीट जनरेट होउची, जेतबेले एबे बहुत अधिका हीट जनरेट होउची, ताले कोन हबो, हमरो मेंटल पोर्शन रे कोन हबो, हमर गोटे कन्वेक्शनल करंट फ्लो हबो. कन्वेक्शनल करंट काहे कि आमे जानि जे जदि भाबंतु गोटे जगह बहुत अधिका हीटेड अछि, ओके, आउ गोटे जगह हमरो लेस हीट अछि, ताले कोन हबो, जोडी मोर हीट अछि सेठू कोन हबो, लेस हीट को हमरो करंट फ्लो करिवो, राइट. हमर करंट मोर हीटेड रीजन रु लेस हीटेड रीजन को करंट फ्लो करिवो, राइट. तो एठी कोन हबो, एठी कोन हबो, जेतबेले मेंटल पोर्शन रे हमर बहुत अधिका हीट जनरेट हला, से हीट कोन हबो, धीरे 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 हमर ऊपर को राइज करिवो, राइट. धीरे 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 ऊपर को राइज करिवो. आ ता संगे ऑब्वियसली तो राइज करछि, से कोन करिवो, ता संगे मटेरियल नै कि भी संगे रे जीवो, राइट. ये राइज करिवो, आ कोन करिवो, एठी आसी के हमर जो क्रस्ट पोर्शन अछि ताकू हिट करिवो. एठी आसी कोन करिवो, हम क्रस्ट पोर्शन को हिट करिवो. एंड जेतबेले से एठी का आसीगला, तापर कोन हबो, एठी से फर्दर ऊपर को जाई परियोनी, बिकॉज़ क्रस्ट अछि. तो से कोन करिवो, इट विल स्टार्ट स्प्रेडिंग in both directions. It will start spreading in both directions, right.
तापर कौन हम ये धीरे धीरे ये बहुत अधिका हिट जनरेट होता किंतु ऊपर को धीरे धीरे गला ये कौन हम कूल हम तापर एठी आसिक स्प्रेड हला कूल हेले कौन हम पुणी सेटा कौन करियो डिसेंड करियो राइट कूल हेले पुणी कौन करियो डिसेंड करियो तापर फर्दर जतले पुणी हिट हम ये कौन करियो पुणी राइज करियो राइट तो अर्थर होम्स कहले कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अच्छी कंटिन्यूअसली कौन होची हमर कन्वेक्शनल करंट फ्लो होची इन द मेंटल पोर्शन ओके एतिक बुझा गला एबे जे हम जहा कहली कन्वेक्शनल करंट थ्योरी रो Yes, sir. okay then a time will come you will understand this that a time will come when this currents will try to okay a time will come when this current will break the crust which it is hitting continuously तळु आसुचंती continuously ये crust रे hit करछि continuously crust रे hit करछि तापर कोन करछि जले ऊपर को जाई न पारथला से कोन करथला साइड को मूव करथला राइट जले साइड को मूव करथला से कोन करथला एठू भी ड्रैग करथला ए जो हमर जो ब्लैक पोर्शन ता अछि जो crust पोर्शन ता अछि सेठू से कोन करथला सेठू से कोन करिवो किछि पोर्शन ता संगे ड्रैग करी कि नै जीवो संगे एठी भी सेया करिवो तो कंटिन्यूअसली से जतले ड्रैग करी नै छि आ हिट करूछि फाइनली कौन हम ये गोटे से क्रैक फॉर्म करदब यस और नो फाइनली ये गोटे क्रैक फॉर्म करदब क्लियर एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस एंड दिस एंड देन जतले सब्सिक्वेंटली आउ करंट फ्लो हम से करंट कौन करिवो एठी जो ऊपर जो क्रस्ट थिला से क्रस्ट को सी कौन करिवो इट विल ड्रिफ्ट देम अपार्ट फाइनली कौन हम जो क्रैक हो गला जो ये करेन्टा जाऊँगी ये कौन करिवो ए क्रस्ट टाकू ता संगे मूव करके नहीं जीवो सिमिलरली ए करेन्टा कौन करिवो ए क्रस्ट को ता संगे मूव करके ए डायरेक्शन रे नहीं की पळेबो एंड दिस विल लीड टू मूवमेंट इन द प्लेट्स मु कहबी प्लेट्स कौन मूवमेंट इन द प्लेट्स एतिक बात समस्या क्लियर तो Yes, sir. okay so now see जेतबेले कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी आसला सेतबेले दीटा भूल थिला गोटे से कहउतले कि कॉन्टिनेंट्स मूव करंती ओके आ सेकंड तांकर जो फोर्सेस मूव कराई सेटा कहउतला तो फर्स्ट थिंग कन्वेक्शनल करंट थ्योरी रे आर्थर होम्स कौन कहि देले आर्थर होम्स कहले कि द फोर्स which is leading to the movement of this plate is this a movement of the crust is this okay the convectional current okay see एटा आर्थर होम्स कहि देले तापरे हमर नेक्स्ट आसला प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सेटा को भी हम एते डिटेल रे जिबानु प्लेट टेक्टोनिक माने कोन कि जदि के जानि तो प्लेट टेक्टोनिक माने कोन कहि दियो माथा ऊपर प्लेट उडा बुलुचंती ओके फाइन Sir, oceanic crust and the okay tecton means building means not the structural building माने घर वाला building नहीं building means when we build something I am talking about that building okay tecton means building something plate tectonic means the building activity due to the movement of the plates ठीक अछि तो tecton means building a plate tectonic means something that is being built by the plates और सेटा काई को due to the movement of the plates एबे हम जानिबा सेटा कोन plates कोन सेटा मु एबे कहूची ओके मु कहिथिली कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रे आपनकर अल्फ्रेड वेगनर कहिथिले कि कॉन्टिनेंट मूव करे राइट किंतु प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी रे एडा जाना पड़ला कि कॉन्टिनेंट्स मूव करे
कॉन्टिनेंट्स जोठी अछंती सेठी सेमाने अछंती ओके कॉन्टिनेंट्स मूव करेनी रादर जो अर्थ क्रस्ट अछि it has been divided into many just a second. The earth's crust is divided into many plates. Okay, it has been divided into many plates, and what moves is these plates and not the continent. There is movement in the plates and not the continent. ठीक अछि इटा प्लेट कॉन्टिनेंट सॉरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी रे कुआला तो कौन कुआला कि हमर जो अर्थ क्रस्ट अछि इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी प्लेट्स अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू मेनी प्लेट्स राइट and this plates move due to the convectional current ठीक अछि एतिकी बाट समस्त बुझा गला कि आमे कौन डिस्कस कले आमे डिस्कस करिया जाउछ इंडियन फिजियोग्राफी ता पई मु आपनको किछि वर्ल्ड ज्योग्राफी रो किछि पार्ट ब्रीफ रे कहूची फर्स्ट कहली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जोथर कुआला कि कॉन्टिनेंट मूव करे राइट किंतु आमे जानिले परे कि हां काहे कि मूव करे से कहते काहे कि मूव करे सेटा भूल थिला तो अर्थर होम सेटा को ठीक कले तापर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी रे कुआ गला कि कॉन्टिनेंट मूव करेनी रादर कॉन्टिनेंट हम जो पूरा अर्थ क्रस्ट सेटा बहुत गुडे प्लेट से डिवाइड हेची कॉन्टिनेंट मूव न करी कि ए प्लेट्स जाको मूव करे ये जो प्लेट्स अच्छी ये प्लेट्स आपणकर मे बी कॉन्टिनेंटल प्लेट है पारे ओशनिक प्लेट है पारे और मे बी बोथ भी है पारे किसी भी है पारे ओके कॉन्टिनेंट है पारे ओशनिक प्लेट है पारे या बोथ है पारे किसी भी है पारे ओके किंतु किंतु जहां मूव करूतनी सेटा ई प्लेट्स मूव करूचंती एंड नॉट द कॉन्टिनेंट्स एते की बुझा गला आपनको समस्त को Yes, sir. am I being too fast No, sir. मु एई पार्टटा जदी भी आपन फास्ट लागुची कारण एईटा हमर एते दरकार नाही सेहिति पे एटी फास्ट पढौची सो दैट म आपन इंडियन फिजियोग्राफी रो जो पार्टटा दरकार सेटा आपन बुझा जिवो ओके क्लियर Yes, sir. ओके सो एबे हमें जानि गले कि कॉन्टिनेंट मूव करूनांती प्लेट्स मूव करूचंती एंड इन शॉर्ट वी विल सी द plate interactions okay in short we will see the plate interactions plate interaction रे first let's see continent oceanic convergence ओके कि कहि परिबे कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट जदी कन्वर्ज हो कोन होबो Sir, volcano. volcano okay fine Oceanic plate will subdue under the continental plate, and then it will melt, and the it will erupt as a volcano eruption. okay very good तो continental plate आउ ओशनिक प्लेट जेतले इंटरैक्शन हुए जनरली हमर कोन हुए जो कॉन्टिनेंटल प्लेट अछि कॉन्टिनेंटल प्लेट हमर लाइटर थाए ओके आउ जो ओशनिक प्लेट ये हमर कोन हुए डेंसर थाए ओके कॉन्टिनेंटल प्लेट हमर लाइटर थाए आउ ओशनिक प्लेट हमर डेंसर थाए ठीक अछि तो लेट्स से दीटा प्लेट अछंदी लेट्स से ये दीटा प्लेट अछंदी ओके एटा गोटे प्लेट एटा हला हमर कॉन्टिनेंट एटा हला हमर ओशनिक मु कहली ये हला लाइटर और ये हला डेंसर अबिका मते कहंतु कि जदी ए दी जनक भितर कन्वर्जेंस होची कन्वर्जेंस मींस दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड फाइनली दे मीट ता परे चले फर्दर माने भाबंतु ओशनिक प्लेट ए पोजीशन को पळे आसला एंड फर्दर दे आर कन्वर्जिंग ताले एठी कोन होबो ए जो ओशनिक प्लेट ता अछि ये जो ओशनिक प्लेट अच्छी लेट्स से जस्ट अ सेकंड this is a continental plate
and this is a oceanic plate, right? ये जो oceanic plate अच्छी ये कौन होबो as it is denser जेतोले एमाने कोलाइड करिवे oceanic plate कौन होबो it will subduct. Okay, oceanic plate will subduct below the continental plate. Okay, this oceanic plate will subduct below the continental plate. ये continental plate रो तळु को पळेबो काहे कि एटा denser. Okay, जेतोले तळु को पळेबो एठी आसी कोन होबो से मेल्ट हेइ जिवो, राइट? एठी आसी कि से मेल्ट होबो आ मेल्ट हले हमें जानि छे कन्वेक्शन करंट थ्योरी रे भी हमें डिस्कस करथले त गोटे जिंस गरम अछि से कोन होबो राइज करिवो ऊपर को, ठीक अछि? त मेल्ट करिवो से कोन होबो तार डेंसिटी कमिवो से राइज करिवो ऊपर को, राइट? डिटेल्स हम कहूनी किंतु खाली आपण एटा ऑब्वियसली जानि परथबे। तो एठी कोन होबो जेतले मेल्ट करिवो ये कोन होबो ये आसी कि एठी कोन करिवो वोल्कानिज्म होबो आ एठी आसी कि वोल्कानो फॉर्म करिवो। एटा बुझा गला? एटा बुझा गला समस्तन को? Yes, Yes, sir. sir. ओके आउ कोन हेबो खाली एमिति नुहे कि एठी वोल्कानिज्म होबो। एठी कोन होबो मते गोटे कथा कोंदु जेतबेले ए जो ओस्मिक प्लेटटा जेतबेले कॉन्टिनेंटल प्लेट तळକୁ सबडक्ट करूची एठी स्क्रैपिंग भी होबो। स्क्रैपिंग माने फॉर एग्जांपल लेट्स से आपण गोटे बटर की आइसक्रीम भाबंतु धरचंदी ता ऊपर आपण छुरी टा केमि ड्रैग करूछन किछि लेयर से छुरी ऊपर भी आसी कि पहुंचीबो कि नै माने जेतबेले एईटा आ तळକୁ खसिबो जेतबेले एईटा तळे सबडक्ट करिवो एईठी किछि किछि मटेरियल ए जो ओस्मिक प्लेट रो किछि किछि मटेरियल जेतबेले जाउची जेतबेले तांको भितर गोटे फ्रिक्शन होउची किछि किछि मटेरियल एईठी भी डिपोजिट हबो कि नै Yes, sir. এই जो Yes, मटेरियल sir. एटा को एक्रिशनरी वेज कोंती एटा को एक्रिशनरी वेज कोंती। ओके एक्रिशनरी वेज এই जो एक्रिशनरी वेज अछि ये कोन हबो एठी जेतबेले बारंबार बारंबार एठी एक्युमुलेट हबो आ फर्दर जेतबेले ओस्मिक प्लेट आउ कंप्रेस करिवो एमाने कोन हेबे एमाने भी कंप्रेस हेबे, ठीक अछि? एमाने आ भितर को जाई परनंदे एमाने बाहर अछंती एमाने कोन हेबे एमाने राइज करिवे एज फोल्ड माउंटेन्स। एमाने एठी राइज कर देबे कर जिवे एज फोल्ड माउंटेन्स। ओके फॉर एग्जांपल आपण जदि जानिथिबे हमर साउथ अमेरिका रे आपण देखिथिबे कि एंडीज टा जोटा अछि सेटा कोस्टल रीजन रे अछि। साउथ अमेरिका रे लेट्स से एंडीज टा कोस्टल रीजन रे अछि। एठी कोन होची एठी गोटे प्लेट अछि नोन एज नास्का प्लेट। गोटे नास्का प्लेट अछि व्हिच इज अ ओस्मिक प्लेट। ए नास्का प्लेट कोन होची हमर जो साउथ अमेरिका अछि ता तळकु एठी कोन होची सबडक्ट होची। तो सबडक्ट होची एठी एंडीज माउंटेन ए जो एक्रिशनरी वेज एठी रहिला से फर्दर कंप्रेस हला तो एठी कोन हला आपनकर एंडीज माउंटेन फॉर्म हला, राइट? आउ जो प्लेट टा फर्दर सबडक्ट है कि जो मेल्ट करिकि राइज कला एठी आपण देखिबे कि बहुत गुडे वोल्केनिक माउंटेन्स अछि सच एज चिम्बोराजो माउंटेन कोटोपाक्सी हां कोन कोटोपैक्सी कहले कि आगे सर हां कोटोपैक्सी चिम्बोराजो ए सब जो वोल्केनिक माउंटेन अछि इट इज बिकॉज ऑफ दिस, ठीक अछि? एटा हमर कोन हला ओस्मिक आउ कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस समझ बुझा हला ए पार्ट टा। yes sir ओके फाइन। सर एई जगह जो कॉर्डिलेरा या कोई मतलब यस दीटा यस लेयर यस कॉर्डिलेरा भी हबो किंतु मु डिटेल रे जाउनी कारण इंडियन ज्योग्राफी रे सेटा नाही माने से सब किछि फॉर्म हुएनी तो मु सेति में बेसी डिटेल रे जाउनी। मु खाली आपनकर से पार्ट टा क्लियर रहिले आपण इंडियन ज्योग्राफी रे लिखि परिबे बोली मु एई पार्ट गुडा पढौची। फाइन, ठीक अछि? ओके नेक्स्ट हमर एटा ओस्मिक कॉन्टिनेंट सरी गला। सेकंड पार्ट टा हमर कॉन्टिनेंट हमें देखिबा। कॉन्टिनेंट कोन हुए fold mountains. Okay, in continental convergence what happens here as we know this both are lighter, these are less denser, right? दीटा को continental crust सेमान कोन थांती डेंसिटी कम थे, right? So in continental convergence generally कोन होबे सबडक्शन हुए continental crust रे कोन होबो ये गोटे कॉन्टिनेंट किंतु कोन होबा आंकर सबडक्शन होबोनी बिकॉज़ बोथ आर लाइटर, राइट?
तो एठी कोन हबो when they will converge एठी कोन हबो आपनकर fold mountains form हबो due to compression बहुत सिंपल भाबंतु कि आपण गोटे कॉपी धरंतु जो लंबा कॉपी ताकू आपण तबळे दी साइड रो प्रेशर पके कोन हबो से मझिरे गोटे एमती माउंट भले गोटे हि जीवन सो तो दैट इज कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस आउ बेसी किछि नै कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस कोन होउची कंप्रेसिव फोर्सेस हमर रहउची कंप्रेसिव फोर्सेस राइट तो कंप्रेसिव फोर्सेस पई कोन हबो दीटा को लाइटर तो rather than getting subducted under another plate एठी कोन हबो you will find fold mountains you will find the formation of fold mountains here ठीक अछि केही का तळ को सबडक्ट करिवेन क्लियर एटा बुझाला समस्त को कि कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस रे फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म हुए Yes, Yes, sir. sir. ओके फाइन तो एति की मते आपण को कहिवार थिला बियॉन्ड इंडियन ज्योग्राफी अबिका लेट्स get back to our topic ठीक अछि so here as I said in Indian physiography the first thing that we'll be discussing इंडियन फिजियोग्राफी रे हमें कौन डिस्कस करियो the northern mountains the northern plains ओके मु एठी की पांचटा डिवीजन करिछि नॉर्दर्न माउंटेन्स नॉर्दर्न प्लेन्स पेनिनसुला प्लैट्यू कोस्टल प्लेन्स आइलैंड्स आउ कोडी कोडी आपन को एटा भी देखिया को मिलियो द इंडियन डेजर्ट ओके बट आई विल बी कवरिंग इंडियन डेजर्ट अंडर द नॉर्दर्न प्लेन्स इटसेल्फ ठीक अछि तो आमे इंडियन फिजियोग्राफी रे एई पांचटा डिवीजन देखिबा हमरो जो इंडियन फिजियोग्राफी अछि ताकू डिवाइड करा हिची एई पांचटा पार्ट ओके आमे एई पांचटा पार्ट देखिया तो फर्स्ट मते कहंतु कि फिजियोग्राफी माने कोन सर मेनली टॉपोग्राफी features yes physiography means the topography or the features we will be discussing the land features under Indian physiography okay and in that land features we will be discussing this part okay so एबे भी मु कहली कि आमे एबे डायरेक्टली नॉर्दर्न माउंटेन्स को आसीने नॉर्दर्न माउंटेन्स को आसी आकरू आ गोटे छोटो पार्ट हमकु डिस्कस करियो पड़ियो राइट सो आमे एबे जो पढिले कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो सेथुरे आमे गोटे जिंस जानि गले कि the land features that we are seeing now it was not the same throughout the history right ता माने एबे excuse me ता माने एबे आमे जो northern mountains देखुचे right it was not the same right maybe there was plain or something else and the mountains were formed in a later period तो जेतले हमें मु जो आपन कहली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो सेथिरे आमे ता आगुरु सॉरी जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी कहली मु कहली कि some part there was a Pangea and it got divided into many different parts right ता भितरे गोटे पार्ट हमरो इंडियन प्लेट भी ता भितरे गोटे पार्ट थिला राइट ता भितरे हमरो इंडियन प्लेट भी गोटे पार्ट थिला एंड the Indian plate it got separated from the Gondwana land मु कहितली दीटा लैंड गोटे तळटा ऊपरटा लॉरेसिया थिला आ तळ पार्टटा जोटा भांगी थिला सेटा थिला गोंडवाना राइट the Indian plate it started separating from the Gondwana land somewhat around 120 million years ago
ठीक अछि, and then it started moving towards the north. Okay, then it started moving towards the north. एठी आपण डायग्राम में देखि पारथुबे एठी कि एठी देखैछि कि Indian landmass 70 million years ago it was somewhere below the equator, and जो 50 million years ago it was um, somewhere around the equator. Okay, somewhere around the equator. आउ एई टाइम रे हमर जो डेक्कन ट्रैप्स आपण जानि चंदी कि बेसाल्टिक रॉक अछि डेक्कन ट्रैप्स रे, एई टाइम रे एबे जोठी आपण देखिथिबे रियूनियन आइलैंड अछि, राइट? सेई पाखरु जेतोले इंडियन प्लेट आसला सेठी गोटे हॉटस्पॉट अछि, तो से टाइम रे कोन हला हमर एठी वोल्केनिज्म रु हमर डेक्कन ट्रैप्स जो बेसाल्टिक डिपॉजिट्स आसिला, आउ हमर ए एरिया रे कोन हला डेक्कन ट्रैप्स फॉर्म हला. ओके, that is a topic for later classes. But the Indian plate konala, it started moving to the north, and finally what happened, it collided with the Eurasian plate, and that led to formation of the northern mountains. सेटा में एटा मु आपनको शॉर्ट रे कहली, एटा में हमें डिटेल रे डिस्कस करबा कि केमती इंडियन प्लेट मूव करी मोर नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म कला. ओके, so okay, just see this diagram. Okay, so it is showing here that this is the Indian plate, this is the Indian plate, and this part, this is the Eurasian plate. Okay, this is the Indian plate and this part is your Eurasian plate. And here the Indian plate is moving towards the Eurasian plate. Okay, here the Indian plate is moving towards the Eurasian plate, and while the Indian plate is moving, ओके, ता आगुरु गोटे जिनस खाली मुझे कहीदेवी, जितेबाला मुझे कि आमर लॉरेशिया आ गोंडवाना जो डिवाइड होते से मझे मुझे पांथाल आसारू कौन है वाटर इंट्रूड करला से रिजन को, आउ सेठी आमर कौन है तेथिस सी फॉर्म होता. ओके, तेथिस सी, एंड दिस ओसमिक क्रस्ट दैट यू आर सीइंग is a part of your Tethys Sea. Okay, this oceanic crust is part of Tethys Sea. तो एबे देखंतु एटा हमरो यूरेशियन प्लेट, एटा इंडियन प्लेट. अबिका इंडियन प्लेट मूव करूची टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट, आ मझिरे कोन अछि हमर Tethys Sea. So initially what happened, जेतोले इंडियन प्लेट pushed across the continental crust of the Eurasian plate, Tethys Sea रो जो ओसनिक पार्ट थिला से कोन हला फर्स्ट सबडक्ट कला. ओके, Tethys Sea रो जो ओसनिक पार्ट थिला से कोन हला फर्स्ट subduct kala below the Eurasian plate. Okay, it started subducting below the Eurasian plate. जेतली subduct kala, एठी कोन हला कि तळकु गला, मेल्ट कला, and it, as it melted, the the magma, it released and came to the surface as lava and formed a volcanic arc. ठीक अछि, एठी कोन हला जेतबळे हमर oceanic Indian plate जेतले पुश कला towards the or started moving towards the continental crust, एठी जो हमर oceanic crust ला ये कोन हला, ये subduct कला, राइट? ये तो subduct कला, एठी कोन हला मेल्ट हला, एंड मुझ कहितली जेतले oceanic crust continental crust रो कन्वर्जेंस हुए सेतले कोन हुए, oceanic crust ता हेवी थाए, सी आपनकर subduct करिवो, आ जेतले subduct करिवो तापर कोन हबो, मेल्ट करिवो, आ मेल्ट करला परे कोन हबो, it will rise to the surface. जेतले surface को rise हला, एठी जेतले surface को rise कला सेतले कोन हला, एठी हमर volcanic arc form हला, किछि volcanic mountain सेठी छोटो छोटो volcanic mountain सेठी form हला, राइट? एटा थला फर्स्ट पार्ट. ओके, फर्स्ट पार्ट जेतले हमर एठी किछि volcanic arc form होछि, तापर कोन हला, जेतबेले ये गला एटी volcanic arc form हला, तापर देखंतु एटी जो Tethys Sea अछि, एटी जो Tethys Sea अछि, जेतले सी थिला एटी कोन होतला, ए लैंड रु जो रिवर्स फ्लो करतला, लेट्स से जस्ट अ सेकंड, ए जो लैंड थिला, ए लैंड रु कोन होथिबो, रिवर्स फ्लो करथिबो टू द Tethys Sea, एटू इंडियन
प्लेट रू भी लैंड रू रिवर्स फ्लो करथियो टू द 33C आउ एठी कोन हेतिबो 33C रे एठी 33C रे कोन हेतिबो बहुत गुडे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हेतिबो राइट बहुत गुडे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हेतिबो राइट एठी कोन हेतिबो बहुत गुडे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हेतिबो तो जेतो बळे ओसनिक प्लेट धीरे धीरे सबडक्ट करूथिला आउ इंडियन प्लेट वाज मूविंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट ए जो सेडिमेंट्स कोन होतला ए सेडिमेंट्स धीरे धीरे कोन हला हमरो ए सेडिमेंट्स धीरे धीरे हमर कोन हला कंप्रेस हला ए सेडिमेंट्स हमरो धीरे धीरे कोन हला कंप्रेस हला राइट ए सेडिमेंट धीरे धीरे कंप्रेस हला एंड फाइनली जेतो बळे हमरो पूरा ओसनिक क्रस्टटा सॉरी गला आउ ए जो वाटर एठी थिला ए वाटर कोन हला बाहरी गला दी साइड को वाटर गुडा फ्लश हे गला दी साइड को हमरो ए जो वाटर थिला ये कोन हला दी साइड को फ्लश हे गला एंड फाइनली हमरो इंडियन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कोन हला एशियन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रे आसीकी जेतळे कोलाइड करी गला जेतळे इंडियन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपणकर इंडियन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जेतळे एशियन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रे आसीकी कोलाइड गला सेतळे कोन हला ए जो सेडिमेंट्स थिला एठी जो सेडिमेंट्स थिला से सेडिमेंट्स धीरे धीरे फोल्ड हला आ फोल्ड हे कि हमरो हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म कला से सेडिमेंट्स कोन हला फोल्ड हे कि कंप्रेस हे कि हमर कोन हला हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म कला ओके एति की बात समस्त क्लियर मु कोन कहली एबे Yes, sir. एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन तो आमे एबे एति की जानि गले कि हमरो जो हिमालयन माउंटेन रो फॉर्मेशन रो रीजन कोन थिला हिमालयन माउंटेन रो फॉर्मेशन रो रीजन थिला द कन्वर्जेंस ऑफ टू plates, that is the Indian plate and the Eurasian plate. Okay, two continental plates, that is the Indian plate and the Eurasian plate. Right. So सेति पई हमर कोन हला as we saw just a second okay तो सेति पई कोन हला हमर इटी माउंटेन्स फॉर्म हला राइट एबे आमे हमर पूरा टॉपिक को पळे आछे दैट इज द इंडियन फिजियोग्राफी तो सेतळे जेतळे आपण नॉर्दर्न माउंटेन्स आमे डिस्कस करिया ओके आमे नॉर्दर्न माउंटेन्स डिस्कस करिया आउ आमे नॉर्दर्न माउंटेन्स रो फॉर्मेशन रे आमे जानले इट हैज फॉर्मड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट विथ द यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट आ यूरेशियन प्लेट रो कोलिजन पई हमर कोन हला नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म हेची राइट तो एबे नाउ विल सी the different parts of the northern mountains northern mountain जो अछि तार क्लासिफिकेशन से भी हमें देखिए राइट सो हमें जानले कि कोलिजन रु फोल्डिंग हला फोल्डिंग रु हमरा माउंटेन्स फॉर्म हला बट ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म हेछि ये नॉर्दर्न माउंटेन्स थरे करे फॉर्म हेनि ओके नॉर्दर्न माउंटेन्स थरे करे फॉर्म हेनि बट ये डिफरेंट फेजेस रे फॉर्म हेछि हमर जो नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म हेछि ये कोन हेछि हमर बहुत गुडे phases रे फॉर्म हेछि so the first phase थिला just a second okay so हमर जो नॉर्दर्न माउंटेन्स डिफरेंट फेज रे फॉर्म हेछि आउ ताकू हमें डिफरेंट just a second sorry it is classified into the Trans Himalayas and the Himalayas okay Trans Himalayas and the Himalayas the Himalayas are further classified into the Greater Himalayas the Lesser Himalayas and the
Sivaliks. Okay, the northern mountain set are divided into, or it is classified into these groups. That is the Trans Himalayas, the Himalayas, and the Himalayas has been classified into three parts. That is the Greater Himalaya, the Lesser Himalaya, and the Sivaliks. Okay, so first जो Trans Himalaya अच्छी, okay, first the Trans Himalayas. The Trans Himalaya in itself has been classified into various ranges. That is the Karakoram, the Ladakh, and the Jaskar ranges. Okay, trans गोटे जिनस मु कहि देबो चाहूची एबे मु जहा भी कहिबी मोस्टली दीज आर फैक्ट्स. ओके, एबे बेसी अधिका बुझियार नाही. एबे जहा अछि मोस्टली फैक्ट्स मु कहिबी. एंड जेतो बेले किछि भी कॉन्सेप्चुअल जिनस थिबो सेटा को मु आपनको कहि देबी. ओके, दिस पार्ट रिक्वायर्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सो वी कैन मूव फास्टर इन दिस पार्ट. ओके, सो काराकोरम, लद्दाख आउ जस्का ट्रांस हिमालय ए तीनटा पार्ट डिवाइड हेछि. आउ ट्रांस हिमालय रे सॉरी जस्ट ट्रांस हिमालय रो जो एवरेज हाइट, ट्रांस हिमालय रो एवरेज height is about 5,500 meters. Okay, Trans Himalaya average height जोटा that is around 5,500 meters, and as I said it is divided into three groups: Karakoram, Ladakh and Jaskar. ठीक अछि. आउ Trans Himalaya आउ गोटे important जिंस हला कि it has the Mount Godwin Austen, the peak. Okay, the peak Godwin Austen. Godwin Austen आउ गोटे ना कोन? Mount K2. Mount K2, yes. Okay, Mount Godwin Austen or the Mount K2. Okay, so आमे कोन जानले कि तारा हाइट हला 5,500 meters and the peak Godwin Austen is located here. Okay, and Karakoram forms the boundary of India with Afghanistan and China. Okay, आपण peak सब जगह मन रखिया दरकार नहीं. Godwin Austen, obviously you know that it is the highest peak in India. That's why मैं आपनको एठी Godwin Austen कथा कहली. किंतु आ माने नुहे कि आपण सब मन रखिबे, सब घोसी कि जिबे दरकार नहीं. जदि किछ मन रहि गला भलो कथा, मन न रहिले वेल एंड फाइन. ठीक अछि. किंतु एटा जेतबेले आपण ट्रांस हिमालय लेखुचंती, काराकोरम लेखुचंती, काराकोरम अंडर रे आपनकू Godwin Austen लेखिबा मो हिसाब रे Godwin Austen अच्छा एनु काराकोरम अंडर लेखिनी. ओके, काराकोरम अंडर रे आपनको Godwin Austen लेखिबा दरकार. ओके, so just see here, this is your Himalayas as I was discussing. आउ मु कहली कि जो हमर ट्रांस हिमालयस अछि it is divided into Karakoram, Ladakh and Jaskar, and now we discussed that this part has an average height of 5,500 meters. It I discuss कर देले, and I said that Karakoram forms the boundary with Afghanistan as well as China, and it has the Mount K2. It has the Mount K2. Okay, एटा आपण मन रखिबे. Okay, then let's come to Ladakh. Okay, Ladakh range, it is also a trans-Himalayan range and it lies south to that of Karakoram. It lies south to that of Karakoram, and आर गोटे ऑफशूट अछि, that is the Kailash range. एठी देखंतु Kailash range ये अलगा की एठी देखै छै डायग्राम रे, किंतु लद्दाख रेंज रो गोटे ऑफशूट ही Kailash range.
Okay, it is not a separate range but an offshoot of Kailash range. आउ ए कैलाश रेंज रु जो लद्दाख रो जो कैलाश रेंज अछि सेठु कोन होबा आपनकर इंडस रिवर. ओके, इंडस रिवर ओरिजिनेट करे हमर लद्दाख रेंज जोटा कि कैलाश रु ओरिजिन करे. ओके, इंडस रिवर ओरिजिन करे, राइट. Then south of that is your Jaskar range. South of it is your Jaskar range. तो जेतो बळे आपनकर फिजियोग्राफी आसीबो, फिजियोग्राफी रे लेट से आपनकर नॉर्दर्न माउंटेन्स आसीला. तो फर्स्ट आपन नॉर्दर्न माउंटेन्स आपन कोन लिखिबे? नॉर्दर्न माउंटेन्स हैव बीन formed due to the convergence of the Indian plate with that of the Eurasian plate, and the sediments of the Tethys got folded and compressed and formed the lofty mountains, right? सेटा हला आपनकर नॉर्दर्न माउंटेन्स. देन आपन कोन करिवे? नॉर्दर्न माउंटेन्स रो क्लासिफिकेशन लिखिबे. क्लासिफिकेशन रे फर्स्ट कोन लिखिबे? क्लासिफिकेशन रे फर्स्ट ट्रांस हिमालयस. ट्रांस हिमालयस रे कोन? काराकोरम, लद्दाख, जस्कार. काराकोरम विषय रे लिखिले. काराकोरम विषय रे की फॉर्म्स द बॉर्डर फर्स्ट थिंग. देन गॉडविन ऑस्टिन. ओके, ताठो अधिका कारण आपन को 2 पेज रे आंसर लिखिवार अछि. ताठो अधिका आपन लिखि परनो मैक्स 3 पेज. ओके, ताठो अधिका लिखि भी परिबे. Then you will say that Ladakh range, and from its offshoot, that is the Kailash range, rises the Indus River. तापरे आपण next लिखिबे कि south of it lies the Jaskar range. Okay, then you will come to the Great Himalayas. Okay, just a second. Then you will come to the Great Himalayas. Great Himalayas से extent के कहि परिबे कोठु केते? सर नंगा पर्वत रू स्टार्ट होइछि आई थिंक टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. हां, नॉर्थ ईस्ट रे को जाय नामचा पर्वत. नामचा पर्वत. Okay, yes, very good. So Great Himalayas ro extent, yes कोन कोंदु किसी कहउतले. Okay, so extent is from Nanga Parvat to Namcha Varva in Arunachal. Okay, Nanga Parvat in Kashmir to Namcha Varva in Arunachal. Okay, so एटा आपनकर ग्रेट हिमालय रो आपण एक्सटेंट हला. आउ ग्रेट हिमालय रो ओरिएंटेशन is from east to west, from west to east, but it slacks a bit to the south. माने आपनकर एटी देखौची गोटे सेकंड डायग्राम रे एटी देखंदु. This is our Great Himalaya, right? ए जो पार्ट ता, this part is our Great Himalaya. आपण गोटे जिंस देखि परथिबे कि एठी टिके साउथ को स्लैक करछि कि टिके कन्वेक्स शेप रो अछि ग्रेट हिमालयस. এই পার্টটা দেখନ୍ତୁ ଟିକେ ଏମିତି ତଳକୁ ଯେମିତି ଆମର କନଭେକ୍ସ ଲେନ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଥାଏ, କନକେଭ ଲେନ୍ସ ଏଇ ଟାଇପ ର ଥାଏ. ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା କଣ ଟିକେ ସାଉଥ ମାନେ କନଭେକ୍ସ शेप ର ଅଛି. ଓକେ, ତା ରିଜନ ठीक ଅଛି, ତା ରିଜନ କହି ଦଉଛି, ଏତେ ଡିଟେଲ ରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ. ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ଲେଟ ଆସିକି ହିଟ୍ କଲା ଆପଣଙ୍କର यूरेशियन प्लेट रे. ओके, से फर्स्ट वेस्ट रे हिट कला एंड द फोर्स वाज टू हाई. ओके, द फोर्स वाज टू हाई. तो एठी कोन हला हिट कला बहुत जोरे. तापरे हमर इंडियन प्लेट इट जस्ट टर्न टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड. ठीक अछि, आगो एपटे हिट कला, तापरे डोर जेमती आपण खोली की बंद करंदी सेही भलिया से कोन हला. देन इट टर्न टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड एंड इट हिट द ईस्टर्न पार्ट. आ ईस्टर्न पार्ट जो फोर्स थिला सेटा आउरी अधिका जोरे हिट हेतिला. ओके, सो एई पार्ट रे बहुत अधिका फोर्स थिला. आपण वेस्ट पार्ट रे, ईस्टर्न पार्ट रे ताटू अधिका फोर्स थिला. ओके, बट ए जो मझी पार्ट ता थिला, ओके, एठी सेते अधिका फोर्स रे कंप्रेस हेलान. बट आपण को वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट रे बहुत अधिका फोर्स रे कंप्रेस हला. तो सेथि पई ए जो
मझी पार्टा एटा कोन हला टिके कन्वेक्स हेकी तळकु हेकी रहला एज वेल एज आ गुडा भी जिंस देखिबे जतले एठी आ गुडा जिंस भी आपण मार्क कर परिबे कि द एठी जो स्प्रेड अछि जो गैप टा एठी देखंतु गोटे सेकंड एठी जो गैप टा आपण देखंतु रेंजेस भितरे एई गैप एठी टिके अधिका अछि आउ एठी देखंतु एठी गैप बहुत अधिका माने बहुत कम अछि आउ एठी मीडियम अछि सबुटो अधिका गैप ई रीजन रे अछि देखंतु ई रीजन रे सबुटो अधिका गैप अछि आउ ई रीजन रे कम अछि इट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स एठी बहुत अधिका फोर्स रे जते बळे कन्वर्ज हला तो एठी अधिका कंप्रेशन हला एठी भी अधिका हला किंतु एठी सेते अधिका कंप्रेशन हेई पारला राइट बुझा हला ए पार्ट ता ए पॉइंट ता Yes, sir. ओके सो ग्रेट हिमालयस रे एक्सटेंट कोडा नंगा पर्वत रु नामचा पर्वा एंड इट हैज अ कन्वेक्स शेप it has a convex shape towards the south convex shape towards the and it has the highest peak of the world. It has the highest peak of the world, that is the Mount Everest. Highest peak of the world, that is Mount Everest, as well as au kichi important jota India re gote important peak, that is your Kanchenjunga. Okay, एटा हला important peak. किछि passes बहुत passes अछि आपण मने किछि भी लिखि परिबे ओके बिकॉज़ एटी आपण स्पेसिफिक को पास विषय पचारिबोनी आपण इच्छा आपण कोई पास लिखि परिबे किंतु गोटे दिरा पास फॉर एग्जांपल बुर्जिल पास जोजिला okay so these are some of the passes that is found in Great Himalayas okay so this was about Great Himalayas then we'll move to the Lesser Himalayas okay or Middle Himalayas ki Himachal Himalayas जहाँ भी अपन कहि परिए Himachal Himalayas Middle Himalayas or the Lesser Himalayas okay one thing that I left here is the height average height of the Himalayan mountains are 6,000 meters okay this is the average height then let's move to the Middle Himalayas or Himachal Himalayas जो Himachal Himalayas अछि तार average height is around 4,500 kilometers okay जो Himachal Himalayas अछि तार average height is around 4,500 kilometers and this range जो Himachal Himalaya range अछि एटा फर्दर बहुत गुडे छोटो छोटो रेंज को डिवाइड करा हेछि ओके Himachal Himalaya is divided into many smaller ranges okay the reason I will be saying it first मु तारो जो रेंजेस ना कहि दोछि such as पिरपंजाल धौलाधार महाभारत नागटिब्बा just a second Masuri range Naktibba okay so these are some of the ranges that the Middle Himalayas or the Lesser Himalayas have been divided into मते कहि परिबे काहे कि एठी एते गुडा रेंजेस अछि माने Great Himalayas हमें देखिले कि it was a single range just a second देखन तो एठी Great Himalayas जो अछि हम देखछु एठी ऊपर ଗୋଟେ सिंगल कंटीन्यूअस रेंज अछि ओके बट हमरो जो Middle Himalayas अछि और let's say the Himachal Himalayas it has been divided into many ranges काहे कि such as जो पिरपंजाल धौलाधार Sir, antecedent rivers. Yes, very good. Because ଆମର Himalayan rivers जो अछि Great Himalayas रू जेतले रिवर डिसेंड करूचंदी
ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, they are cutting through the middle Himalayas, they are cutting through the middle Himalayas। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ fragmented ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଏ ରେଞ୍ଜ ଟା କଣ ହେଇଛି, ବହୁତ fragmented ହେଇଯାଇଛି, ରାଇଟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡେ ରେଞ୍ଜେସ୍ ଫର୍ମ ହେଇଛି। ଓକେ, ओके सो हिमाचल हिमालयस रे हम कोन देखले कि एवरेज हाइट तार डिफरेंट रेंजेस सच एज पीरपंजल, धौलाधार, मसूरी रेंज, महाभारत रेंज, ये सब तार रेंज अच्छी। एंड सम ऑफ द रिवर्स that originate from here is Jhelum, Chenab, Kisanganga। ओके, झेलम टा हमर पीरपंजल फुट रू origin करे। ओके, so these are some of the rivers that originates from the middle Himalayas। ओके, आपण जदी एटा भी आपण चाहिए लिखि परिवे कि it has been divided into so many smaller ranges because of the antecedent rivers that flow from the greater Himalayas cut through this range, right? सेटा भी आपण लिख परिवे। नेक्स्ट, the Sivalik range। ओके, शिवालिक को आउटर हिमालयस भी कहते, it is also known as the outer Himalayas। ओके, एटा कोठू एक्सटेंड करे, it extends from Potwar plateau। Potwar plateau कोठी in Pakistan, extend from Potwar plateau in Pakistan and flows and sorry not flows and extends till the ब्रह्मपुत्र वैली। जो शिवालिक रेंज अच्छी, इट इज ऑलमोस्ट अ कंटिन्यूअस रेंज, किंतु हमर एटा जस्ट जो तिस्ता रिवर अच्छी सेठी टिके रेंज टा कोन हेची। ओके, ए डायग्राम रे देखिनी, बट हमर जो शिवालिक रेंज अच्छी एठी कोन होची, शिवालिक रेंज ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, बट जो तिस्ता रिवर फ्लो होची सी शिवालिक रेंज को कोन करे, कट करे, राइट। शिवालिक रेंज को हमर एठी एई पाखरे शिवालिक रेंज को कोन करे, तिस्ता रिवर जो अच्छी सी हमर कट करे। ओके फाइन, so you can write this that it is a continuous range but is broken at the just a second, sorry, but is broken by the flow of Tista river। okay, so शिवालिक रो जो एवरेज हाइट is around 1600 meters। okay, शिवालिक रो एवरेज हाइट is around 1600 meters। okay, एवरेज हाइट ऑफ शिवालिक इज अराउंड 1600 meters। आउ गोटे जिंस जो शिवालिक हमर जो फॉर्म हेची, एटा केमती फॉर्म हेची, हमर जो अपर हिमालयज अछि, ओके, जो अपर हिमालयज अछि सेठू कोन हुए, हमर लेट्स से
just a second. This is our Himalaya, right? A Himalayan range ru एठी कोन हुए जेतबेले रिवर्स फ्लो करूची जेतबेले रिवर्स फ्लो करूची ए रिवर्स कोन करिवो जेतबेले एठी कोन हला इरोड करूची इरोड करिकी सैंड ग्रेवल रॉक्स ए सब आनी की डिपॉजिट करूची हमरो कोठी ए तळ पार्ट राइट ए जो सैंड ग्रेवल्स एक्सेट्रा आसी की डिपॉजिट हला ए सैंड ग्रेवल जेतबेले फर्दर हमरो कंप्रेशन जेतबेले हमर कोन होची इंडियन प्लेट एबे भी मूव करची टुवर्ड्स यूरोपियन प्लेट कंप्रेशन होची जेतबेले कंप्रेस करूची जेतबेले कंप्रेस करची ए सैंड ग्रेवल एटी कोन होची एक्युमुलेट होची एटा एक्युमुलेट हेची एंड ड्यू टू कंप्रेशन शिवालिक रेंज फॉर्म हेची ओके आमे जानिछे कि ई जो हमर ग्रेट हिमालयस आउ हिमाचल हिमालयस एमाने सेडिमेंट्स ऑफ टेथिस सेटा जेतबेले कंप्रेस हला सेथुर फॉर्म हेचंदी किंतु जो शिवालिक फॉर्म होची ये कोन फॉर्म केमती फॉर्म हला जो सैंड ग्रेवल अपर हिमालयस रु इरोड हेकी तळु को आसिला सी एक्युमुलेट हला आउ फर्दर ताकू कंप्रेस करिकी हमरो शिवालिक रेंज फॉर्म हेची क्लियर ए पार्टटा मु शिवालिक रेंज रो फॉर्मेशन पार्टटा सर अगेन आउट ओके ओके फाइन कहि दोछु गोटे सेकंड it is formed by the compression of the sand gravels boulders brought down from the upper Himalayan mountains from the upper Himalayas okay okay तो मु एठी कोन कहली कि हमरो एठी जो अपर हिमालयस अछि एठी हमरो अपर हिमालय फॉर्म हे जेता हिमालय फॉर्मेशन ता तीनटा फेज रहितला ठीक अछि तीनटा फेज रहितला फर्स्ट फेज रे हमरो ट्रांस हिमालयन आउ फर्स्ट फेज रे हमरो ट्रांस हिमालय आउ ग्रेट हिमालयस फॉर्म हेले जोटा की वाज समवट अराउंड 30 मिलियन इयर्स अगो अंकर फॉर्मेशन ता कंप्लीट हे जाइतला ओके 30 मिलियन इयर्स अगो अंकर फॉर्मेशन कंप्लीट हे जाइतला ता परे हमरो हिमाचल हिमालय फॉर्म हला ओके हिमाचल हिमालय हमरो अराउंड 20 मिलियन इयर्स अगो हमरो फॉर्मेशन हे गला तो फर्स्ट फेज रे हमरो ग्रेट हिमालय हला 30 मिलियन ता परे हमरो हिमाचल हिमालय हला व्हिच वाज अराउंड समवट अराउंड 20 मिलियन इयर्स ता परे हमरो लास्ट रे शिवालिक सेइची which was around 2 million years ago शिवालिक फॉर्म हला ओके सो माने 20 रु 2 ओके सो एबे देखंतु एटा 30 मिलियन इयर्स अगो फॉर्म हे गला हमरो हिमाचल हिमालय 20 मिलियन इयर्स अगो फॉर्म हला तापरे सेतल जो रिवर्स फ्लो होतला से रिवर्स कोन हला से रिवर्स जेतल फ्लो करिवो से रिवर्स उपरु इरोड करिक मटेरियल नै के आसीबो एठु भी रिवर्स फ्लो करिवो मटेरियल नै के आसीबो ता संगरे तो आसी कि से माने एई एरिया रे डिपॉजिट कले राइट एई एरिया रे से माने कोन कले डिपॉजिट कले तो सेई जो मटेरियल थिला सेई जो डिपॉजिट थिला सेईटा को फर्दर कंप्रेस जेतले इंडियन प्लेट एबे भी कंप्रेस होउची और इट इज स्टिल कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट राइट तो सेईटा जेतले फर्दर कन्वर्ज हला फर्दर कंप्रेस हला तो सेई बोल्डर्स सेई सैंड सेई ग्रेवल कोन हला इट रोज एज द शिवालिक माउंटेन्स क्लियर I don't know who Yes, has sir. the doubt, but jahar abhi doubt thila clear hai gala. Again, sir. Okay, fine. Okay, so जो शिवालिक रेंज जो अछि शिवालिक रेंज जो अछि सेठी आउ गोटे जिंस आपन को देखिया को मिले सेठी आउ गोटे जिंस आपन को देखिया को मिले दैट इज डून्स डून्स कोन हां डून्स कोन के कहि परिबे
सर दीटा माउंटेन भीतर आई थिंक जो टिके प्लेन टाइप था जो डेराडून ହେଲା Yes, ସେଟା yes. Dunes are nothing but plains. Okay, dunes are nothing but longitudinal plains. एमाने केमती फॉर्म होंदी जनरली कौन हबो, लेट्स से just a second, let's say this is a place and this is bhabantu, this is a mountain. Okay, let's say this is a mountain and there is a river flowing from this mountain. Okay, there is a river flowing from this mountain. तो जेतले फ्लो होउची ए रिवर कोन करची ता संगरे बोल्डर्स वगैरह रॉक्स वगैरह नहीं की आछी, राइट, एंड इट इज डिपॉजिटिंग हियर. लेट्स से एठी से किछि डिपॉजिट करची, बारंबार डिपॉजिट करची एठी. ओके, तो जे डिपॉजिट करची एठी कोन होबो, ए जो रिवर ता फ्लो होउतला, ए जो रिवर ता फ्लो होउतला ये अब एपटो एबे पास करि परिबनी ठीक से, राइट, ये एपटो अब ठीक से पास करि परिबनी. तो एठी कोन होबो, मे बी अ लेक विल बी फॉर्मड हियर, मे बी अ लेक विल बी फॉर्मड हियर. रिवर ता कोर्स चेंज करियो एपटो को, रिवर ता कोर्स चेंज कर दे पारे, बट मे बी देयर इज अ चांस ऑफ अ लेक फॉर्मेशन हियर. ओके, तो किछि दिन ए लेक रहिला, बट एज वी नो ए रिवर ता कंटीन्यूअसली कोन करछि, ट्राई करूछि एटु फ्लो करिया, राइट. किछि एमति टाइम आसीबो मे बी जेतोले कोन होबो एटू लेट्स से किछि पार्ट इरोड हे गला, एटू किछि पार्ट इरोड हे गला. एबे कोन होबो, ए जो लेक थिला, ए जो लेक ता थिला, ए लेक रो वाटर कोन होबो, जस्ट अ सेकंड, ए लेक रो वाटर कोन होबो, ए लेक रो वाटर एटू रिमूव हे जो, इट विल फ्लश आउट. ठीक अछि, किंतु ई लेक रे जतो बळे बारंबार पानी आसी पडुतला, एठी बहुत गुडे सेडिमेंट्स आसी की डिपॉजिट हेतिबो, एठी बहुत गुडे सेडिमेंट्स आसी की डिपॉजिट हेतिबो से टाइम रे, राइट. ए वाटर ता जो फ्लश करि जिवो कोन होबो, से जो सेडिमेंट्स अछि से सेडिमेंट्स ता एबे कोन हला एपडु पानी पळेला, राइट. मु कहली से तो रिवर कोर्स चेंज हो गला एंड ड्यू टू सम रीजन एटू कोन हला, से जो ये थिला हमर जो ब्लॉकेज ता थिला, से ब्लॉकेज रिमूव हे गला ड्यू टू सम रीजंस. एंड एठी कोन हला हमर जो सेडिमेंट्स ता थिला, से सेडिमेंट्स ता एठी रही गला, राइट, से सेडिमेंट्स ता एठी रही गला. तो एटा कोन हला गोटे प्लेन फॉर्म हला, जोटा कि एग्रीकल्चर पई भी बहुत भलो, जोटा कि एग्रीकल्चर पई बहुत भलो. आउ ई प्लेन टाकू कोन कुहंदी, डून कुहंदी. क्लियर, डून किछि नै बट जस्ट अ लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन. डून टा किछि नै बट जस्ट अ प्लेन. सेटा केमती फॉर्म वे, सेटा सेतोले फॉर्म वे जेतोले मे बी ड्यू टू सम रीजंस द रिवर वाटर इज गेटिंग ब्लॉक्ड. द ब्लॉक होबो सेठी कोन होबो, लेक्स फॉर्म हे जिवो, रिवर मे बी द कोर्स चेंज कर दबो. आ ए जो रॉक अछि ड्यू टू सम रीजन मे बी इट विल इरोड एंड द वाटर फ्रॉम द लेक विल फ्लश आउट. तो सेठी कोन रहिबो, गोटे प्लेन रहि जिवो खाली. आ सेही प्लेन टा जो रहिला सेटा आपनकर डून कुहंदी. ओके, से जो प्लेन टा रहिला सेटा आपनकर डून फॉर्म करिवो. आउ सेटा एग्रीकल्चर पई बहुत भलो. फॉर एग्जांपल आपण जानिथिबे कि डेराडून जे जन कहउतले, जे भी कहउतले डेराडून, सेठी का राइस बहुत फेमस जानिथिबे, डेराडून रो राइस बहुत फेमस, राइट. तो से एरिया टा एग्रीकल्चर पे बहुत भलो. ओके, तो शिवालिक्स रे हमकु डून्स भी देखा को मिले ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी लेक्स. क्लियर समझते हैं पार्ट टा? Yes, sir. ओके, जस्ट अ सेकंड. Okay, let's take break for 5 minutes, then we'll resume. Fine. Then I will discuss the Purvanchal or the Eastern Hills. Okay. Okay, sir. Okay. Fine. Okay, so okay, so now, as I said, the Great
My voice is audible? Yes, sir. Okay. Okay. So, as I said, the Great Himalayas, they extend from Nanga Parvat to Namcha Barwa, right? And in the northeast, just beyond the Namcha Barwa, the Great Himalayas, they take a sudden Sir, southward, they the take screen a share sudden, कर Sorry, the screen is not कौन जी? visible, sir. सर screen share Screen share है नहीं. अच्छा, sorry, just a second, just a second. So is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I said that the Great Himalayas, they extend from Nanga Parvat to Namcha Barwa. Okay, you can see the name here. Namcha Barwa is written here. Just beyond Namcha Barwa, the Himalayas take a sudden southward bend. Okay, they bend southward. They take a southward turn, and this bend, in this bend also, the bend is convex, and the convex side is towards the west. The convex side is towards the west. एठी आपण देखि पारथुवे केमती convex अछि और convex टा भी आपनकर तो convex direction अछि, it is towards the west. Okay. And the Himalayas in the northeast are known as the Purvanchal. Okay, they are known as the Purvanchal here. Okay, and it is divided into many ranges here also, and the northernmost range here is the Patkaibam. Okay, the northernmost range here is Patkaibam, and it is located in Arunachal Pradesh. Okay, it is located in Arunachal Pradesh. कि आंध्र प्रदेश लिखी दवानी. It is located in Arunachal Pradesh, and just south of Patkaibam, okay, is the Naga Hills. South of Patkaibam is the Naga Hills, and from the name itself, you can guess that it is located in Nagaland, right? It is located in Nagaland, and it has its highest peak is Saramati. Okay, its highest peak of Naga Hills is Saramati, and south of Naga Hills lies the Manipur Hills. It देखेइनी, but somewhere here is the इटा जो Mizo Hills टा बहुत बड़ा ये diagram में दिखाई देइछि. Just break it into two parts. इटा ए part टा आपनकर, just a second. Okay, ए part टा आपनकर is Manipur Hills. Okay, this is your Manipur Hills, and the Naga Hills and the Manipur Hills, they are separated by this Barel range. Okay, they are separated by this Barel range. Okay, and south of the Manipur Hills lies the Mizo Hills. South of the Manipur Hills lies the Mizo Hills, and its highest peak is Blue Mountain. Highest peak is the Blue Mountain. Okay, आमे गोटे दिन हम कहली कि नागा हिल्स आउ जो मणिपुर हिल्स अछि ता मझिरे तांकु जो सेपरेट करछि सेटा के सेपरेट करछि, तांकु सेपरेट करछि बरेल रेंज, राइट? द बरेल रेंज, it extends further towards the west into Meghalaya, and there it has three ranges, that is the Garo range, the Khasi range,
and the Jaintia range. Okay, or the Garo hills, the Khase hills, and the Jaintia hills. Okay, it is divided into 3 parts. That is the Garo, Khasi, Jaintia hills. Meghalaya plateau re ei tinta hill achi. Okay, and the highest peak in Meghalaya is Nokrek. Na ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯାହାହେଲେ ବି, I guess prelims ବେଳେ Nokrek, and highest peak is Nokrek, and it lies in the Garo hills. ठीक ଅଛି? So this was all about the physiography of Himalaya. जदि हिमालय आपण लिखिबे, हिमालय रे आपण कोन करिवे, फर्स्ट लिखिबे कि केमती फॉर्मेशन हला, तापरे लिखिबे कि क्लासिफिकेशंस कोन अछि. म जतले ऊपर क्लासिफिकेशन करथिली मो सेठी पूर्वांचल लिखि नथिली. गोटे सेकंड. Okay, आपण फर्स्ट लिखिबे केमिति फॉर्म हला, तापर लिखिबे कि इट्स क्लासिफिकेशन, दैट इज द ट्रांस हिमालयस, हिमालयस रे फिर ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक्स, एंड एट द लास्ट यू राइट द पूर्वांचल. Okay. So this was all about your northern mountains in Indian physiography. ठीक अछि, बुझा हला एटा समस्त हो? Yes, sir. Okay. Yes. Okay, very good. Okay, तापरे एटा मु पढेइबिनी, खाली आपन को टिके कहि दउची कि फर्दर आपनकर जो हिमालय अछि, फर्दर ये कोन डिफरेंट जस्ट अ सेकंड. हाँ, फर्दर आपनकर हिमालय ना रीजनल बेसिस रे भी किछि किछि डिवीजन हेता. ओके, मे भी जदि परीक्षा रे पचार दबो कि मत लागुनी पचारियो, फॉर टू स्टे इन द सेफ साइड, आपन खाली एति कि देखि दियंतु कि हिमालय फर्दर रीजनल बेसिस रे इट इज डिवाइडेड एज द कश्मीर हिमालयस, the Himachal Himalayas, the Kumaon Himalayas, Kashmir Himalayas, obviously Jammu Kashmir रे, Himachal Himalayas, obviously Himachal रे, Kumaon Himalayas, Kumaon कोठी अछि? उत्तराखंड उत्तराखंड रे. कुमाऊन हिमालय, उत्तराखंड रे कुमाऊन हिमालयस, नेपाल रे नेपाल हिमालयस, एंड तापरे आपनकर आसाम हिमालयस हिसाब रे ए पार्ट आपनकर आसाम हिमालयस रे जाय. ओके, सो एटा गोटे रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस. ठीक अछि, फाइन. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ आवर फिजियोग्राफी. आउ सेटा हला आपनकर हमर the northern plains. Okay. So excuse me. Okay, before ending the topic of northern Himalayas, sorry, the northern mountains, आउ गोटे छोटो जिनसटे डिस्कस करिवि, that is the significance of the Himalayas. What is the significance of the Himalayas for us? के कहबे? Sir, water resources. सर जो विंड गुड़ा आसे कोल्ड विंड Cold wind. से को Sir, टेरिटोरियल सोवरेंटी. बाबा मते तो लागुची आपण समस्त मेंस क्लियर करके ही रहे, माने मो पार्टी क्वेश्चन बाहरनी समस्त पूरा गोटे पर गोटे आंसर दे सारलेनी. ओके, फर्स्ट ओके, टेल मी सिग्निफिकेंस. हां, मते समस्त बहुत एका संदर कहले तो मते ठीक से सुबिलानी. ओके, क्लियर. ओके, टेल द पॉइंट्स. सर मॉनसून विंड टा आउ जाई परनी इंडिया रु बाहर बाध्य ओके ओके. आरो हेडिंग आपण एज मॉनसून दे परिबे. ठीक আছে. ओके, नेक्स्ट. Sir, it protect from cold winds. It protects from cold winds. Okay, that comes from Central Right. Asia and
and Russian Siberian region, right? Seta kuchandi? Yes, sir. Okay. Okay. Tapare? Sir, its strategic position provides territorial security since ancient time. Territorial security. Yes, sir. से जो Okay. एकदम चाइना Hmm. बॉर्डर जाइछि सेठु. Okay, fine. Very good. Sir, antecedent rivers भी contribute करे country को. Okay. Territorial security आपण further आपण माने जानि परिबे से पॉइंट टा कोन देखि देबे. तापरे नेक्स्ट कोन तो Sir, antecedent rivers. ओके एंटीसीडेंट रिवर्स लिखिया दरकार नै माने हेडिंग टा सेटा न लिखि कि लिखि परिबे कि सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स. Yes, sir. Source of perennial rivers. Okay. Example आपण दे देबे हम जानि थिबे sure. तापरे नेक्स्ट Sir, biodiversity, because altitudinal variation are different ଆମର biodiversity ଅଛି, medicinal plants ବି ଅଛି. ओके एक्चुअली आपण जे देखिबे part of Himalaya comes under the biodiversity Yes, sir, hotspot. hotspot. Okay. तापरे Sir, earthquake भी माने हे पछ because it's a young fold mountain. tourism Tectonic active ଅଛି ସେ region ଟା vulnerable. ओके ओके ठीक अछि सेटा हम लास्ट को लिखिया कि the problems that we face due to the northern mountain. Actually exactly देखिबे northern mountains रो सेटा reason नो सेटा हला आपनकर प्लेट टेक्टोनिक्स रीजन राइट बट नॉर्दर्न माउंटेन्स किछि किछि प्रॉब्लम्स अछि सेटा हम डिस्कस करि दवा. ओके. Sir, how Sir, can you say distinct that Indian subcontinent भी करें. Indian subcontinent Sir, distinct culture रे माने से रोल प्ले करे to create माने Indian subcontinent रे देखियो ଗୋଟେ distinct culture ଅଛି तो जोथरे माने yes and that is because it acted as an barrier सेथि पई भी हे परियो किंतु आ गुटे जिंस भी आपण देखिबे कि इंडिया रे हमर बहुत अधिक कल्चरल डाइवर्सिटी अछि बिकॉज many people from different countries could come to India. तो जदि आपण एया कहया को चाहउचंदी कि because it was it act just a second. Okay, sorry for that disturbance. Okay, so जदि आपण कहया को चाहउचंदी कि because it acted as a barrier which led to a distinct culture ताल सेटा टिके भूल हे जाय पारे because we know that India is a cultural diverse country because people from different region could come and settle here. Sir, Right. migration को मो deny करने I was just saying कि Indian subcontinent जो माने culture हैला in sense of dressing sense, food, clothing माने clothing and dressing sense तापरे way of life को मो कहली माने जहाँ गोटे सेटा लिखि पारि हाँ no problem you can write that आपण एटा लिखि पारि the pahadi culture that we have is due to the influence of the Himalayas right सेटा लिखि हबो no problem cultural significance में खाली हम लिखि के रख दो तापरे आपण निजे सेटार पॉइंट आपण जनरेट करि परिबे. Yes, what else? Sir, geothermal energy ହେଇପାରିବ କି? Very good. Source of geothermal energy such as Manikaran रे आपण जानिथिबे अछि. What else? The source of Tourism natural potential. Very nice. Tourism. What else? sir, it is the spiritual center of India. It is the So many places with spiritual significance.
हाँ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस लिख पारिबे कल्चरल रे आपण स्पिरिचुअल कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस सेटा को भी ऐड कर देबे ठीक अछि पिलग्रिमेज साइट्स सेटा भी लिखि दे पारिबे नेचुरल रिसोर्सेस लिखि परियो कि हाँ फॉरेस्ट रिसोर्सेस छाड़ देले गोटे इंपोर्टेंट जिंस राइट minerals. फॉरेस्ट रिसोर्सेस फॉर एग्जांपल मेडिसिनल प्लांट्स राइट सेटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस आपण समय छाडुचंदी मु सेहि पय कहउछि कि जेतले आपण सब जाक पढिबे पॉइंट्स जाक तो सेतुर कोन आपण बहुत अधिका पॉइंट्स जनरेट करबे एमिति भी आपण माने बहुत पॉइंट्स कहि जानी किंतु एठी आपण कोन ग्रुप रे पॉइंट्स कहउछंती राइट आपण को इंडिविजुअली पॉइंट्स भाबे पड़ियो ठीक अछि सेठी जेतले आपण थियो सेठी इंडिविजुअली आपण को पॉइंट्स भाबे पड़ियो तो फॉर एग्जांपल जेतले हम कहली ज्योग्राफी पढिबे आपण रिवर्स भाबिबे ऑब्वियसली तो से रिवर्स जो फ्लो ही के आसु तार किसी सिग्निफिकेंस नहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जैक्टली आउ किछि नहीं आउ गोटे एग्रीकल्चर पॉइंट अछि एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर हमर जो नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हेछि सेटा से जो प्लेन्स सेडिमेंट्स कोठु आसु फ्रॉम द माउंटेन इटसेल्फ राइट contributes or forms the northern plains or the sediment it contributes to the sediments of the northern plains जहाँ भी अपन लिखि पारे राइट तो रिच एग्रीकल्चर एटू होउची राइट तो these are some of the आ गुटे important point भी हॉर्टिकल्चर भी हमर हिमालयस रे भलो हुए फ्रूट्स वगैरह बहुत भलो आसे एप्पल वगैरह तो सेटा भी लिखि पारिबे orchids Yes, all sir, seeds orchids yes Yes. yes तो आपण लिखि पारिबे कि हॉर्टिकल्चर रे किछि भी एप्पल पियर जहाँ भी लिखि पारिबे तो मु सेया कहूची कि जेतबेले आपण फॉर एग्जांपल एटी सॉइल वाटर एनर्जी टूरिज्म तो इस पॉइंट देखो ऑटोमेटिक आपण को माइंड रे आसी जिवो बुझाला तो सिग्निफिकेंस हला आपनकर दिस इज द सिग्निफिकेंस हां प्रॉब्लम्स भी अछि फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड वगैरह सेटा हमें जेतोले अर्थक्वेक वोल्केनिज्म पड़े सेठी में आपन लैंडस्लाइड्स भी कहि देबी एठी में आउ गुडे जिंस भी आपन कहि दोची मे बी सेठी लैंडस्लाइड्स डिस्कस करिया न करिया आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज़ स्पेसिफिकली सिलेबस रे एठी लेखा इन आपनकर लैंडस्लाइड ऑब्वियसली डिजास्टर मैनेजमेंट रे आपन पढिबे ज्योग्राफी रे लेखा इन किंतु सेठी पई मु भाबिथिल सेठी कहिबी बट एबे कहि दोची गोटे छोटो जिंसडे दैट इज ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି you know that Himalayan region is very prone to landslides, right? Yes, sir. Yes. Yes. Just a second. Kuantu, why Himalayan region is prone to landslides? Sir, semi-consolidated Okay, semi-consolidated कौन? rocks. Consolidated sediments or rocks. Okay, fine. Stratification of sediment. सर एटा यंग फोल्ड माउंटेन तो एटा Okay. टेक्नोटोक्लल एक्टिव अछि एबे भी Okay, very good. What else? Sir, steep slope. Steep slope. Okay, fine. What else? Sir, lack of vegetation. Lack of vegetation. Sir, absent जो गोटे साइड रे जो सदर्न साइड रे ना को ओके किंतु आमे को साइड रे अछि
आमे को साइड रो अछि और को साइड रे लैक ऑफ वेजिटेशन अछि माने कोन दो सर सेटा मु टिके कंफ्यूज। ओके देखो आमे अच्छे सर्जन साइड ठीक अछि किंतु आम साइड रे वेजिटेशन भलो होउची आपण जोटा कहउछने सेटा को आपण कहि परिबे कि डिफॉरेस्टेशन कहि परिबे ओके लैक ऑफ वेजिटेशन जगह यू कैन से डिफॉरेस्टेशन रो प्रॉब्लम कोन होउची कि सॉइल लूज हे जाउची राइट एंड ड्यू टू दैट आपणकर कोन होउची ड्यू टू दैट आपणकर कोन होउची लैंडस्लाइड होउची सॉइल लूज हे जाउची तो ऑब्वियसली सेति पई लैंडस्लाइड होउची क्लियर ए पॉइंट जस्ट अ सेकंड हां ओके क्लियर Yes, sir. आउ कोन हे परियो पॉइंट Sir, Sir, it is a unscientific construction and anthropogenic activities. ओके गुड सो जेतला बड़ हिमालयन रीजन रे जदि प्रोन टू लैंडस्लाइड आसला ठीक अछि फाइन आपण भाबन लैंडस्लाइड पढ़ी कि जाई नांदी माने मु एटा काहे कि कहूची कि भाबन आपण लैंडस्लाइड पढ़ी कि जाई नांदी ठीक अछि एग्जाम रे मु मोर कहिवार इंटेंट हला एया कि डोंट बी फियरफुल ऑफ एनी क्वेश्चन एग्जाम रे मु श्योर एमता जितेंडा क्वेश्चन आसीबो जीएस रे नॉट मे बी इन ऑप्शनल्स बट इन जीएस एमता जितेंडा क्वेश्चन आसीबो जोडा कि आपण जानि नथिबे पढ़ी नथिबे एटा श्योर हबो ओके बट सेठी आपण को एटा भाबियार नाही कि मु एटा पढ़िनी कि मु एटा जानिनी मे बी आपण से क्वेश्चन लास्ट करिवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट माइंड रे सबले एटा रखियार अछि कि किछि भी क्वेश्चन आसु मु ताकू करि परिबी किछि भी क्वेश्चन आसु मु सेटा करि परिबी द रीजन इज कि सॉरी रीजन मु ए माने रीजन मींस बिकॉज़ यू हैव टू ट्रेन योर माइंड इन दैट ठीक अछि भाबंतु एठी लैंडस्लाइड आसला आपण पढिचंती कि हिमालयन फॉर्मेशन पढिचंती ठीक अछि हिमालयन फॉर्मेशन पढिचंती तो हिमालय को थ्रू फॉर्म हिची continental convergence. हाँ कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस राइट ओके तो फर्स्ट जिंस हला कि हम जानि जे कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस हेची सेति पई हिमालय फॉर्म हेची ता माने एंड आ मु बारंबार मो लेक्चर एठु कहउतली कि इट इज स्टिल मूविंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट इट इज स्टिल मूविंग टुवर्ड्स द यूरेशियन ता माने कोन कि इट इज अ टेक्टोनिकली एक्टिव प्लेट राइट टेक्टोनिकली एक्टिव प्लेट तो सेति पई कोन होउची सेति पई आपनकर कोन हबो अर्थक्वेक हबो यस और नो अर्थक्वेक हेले ऑब्वियसली लैंड शेक करिवो एंड जेतो लैंड शेक करिवो तो कोन हबो आपनकर लैंडस्लाइड होबार चांस बढ़ी जीवो यस और नो Yes, sir. Yes, तो sir. आपनकर मु सेया कहूची हिमालयन रीजन देला तो आपन माइंड को डायरेक्ट आसिया कथा कि अच्छा हिमालयन रीजन देछि हिमालय रो फॉर्मेशन केमती हला ओके हिमालयन रो फॉर्मेशन हेछि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट ठीक अछि तापरे कोन हला ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट यस किंतु को जिंस रो फॉर्म हला what was the material that led to the formation of this mountain or what was the Sir, material that was folded Sir, Tethys C. crust, continental crust. sediments of the Tethys right ମୁଁ କହିଥିଲି sediment that was present in the Tethys ହଁ କି नाही ତ Yes, sir. Yes. ତ ଏଠି କଣ ଅଛି ଏଟା ହେଲା sedimentary rocks right ଆଉ ସେ sediments obviously consolidate ଭଲ से sedimentary rocks कौन भलो कि consolidate ही नथिबो राइट आपनकर मेटामॉर्फिक रॉक हो इग्नियस रॉक हो से माने बहुत भलो से कंसोलिडेटेड थांती किंतु सेडिमेंट रॉक आ जो ग्रेवल्स ए सब जिंस कोन अनकंसोलिडेटेड थिबे तो एटा गोटे जिंस आ गोटे जिंस कोन कि जो सेडिमेंट्स रॉक अच्छा से पॉइंट मु आ गोटे दिटा पॉइंट पर कहै एटा ए पॉइंट बुझा गला कि ऑब्वियसली सेडिमेंट्स रू फॉर्म होची तो सेडिमेंट्स relatively less consolidated thandi so that is also a reason why we have
कौन होला जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड ओके फाइन कटि गला केमती हो छाड़ ठीक अछि फर्स्ट पॉइंट वाज हमर टेक्टोनिकली एक्टिव प्लेट second point was unconsolidated sediments जेमति कि हमें कथा हेतले कि शिवालिक्स कोन शिवालिक्स जो सेडिमेंट्स आसुची फ्रॉम हिमाचल एंड ग्रेटर हिमालय से थ्रू फॉर्म होती ता माने से अनकंसोलिडेटेड एते भलो से कंसोलिडेट हे नांदी एंड इट इज इजी फॉर सच रॉक्स टू fall under gravity right ओके नेक्स्ट कोन पॉइंट हे परियो भाबंतु कि ओके ठीक अछि एटा हमर हे गला तापरे ऊपर कोन होउची रिवर्स फ्लो होउची यस और नो आउ गोटे स्टीप स्लोप हे गला राइट स्टीप स्लोप हे गला आउ गोटे पॉइंट कोन हला कि रिवर्स ओके वी हैव वेरी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हियर एंटीसीडेंट रिवर्स तो एमाने कोन करिवे they will cut through the mountain से माउंटेन जरे काटिबे सेन कोन करिवे तांका संगे सेडिमेंट्स नै कि आसीबे ओके एंड they will loosen the surface yes or no बुझा हो जे पॉइंट Yes, sir. तो एटा भी गोटे पॉइंट हबो आ कोन हबो पॉइंट गोटे एस्पेक्ट तो अपन पूरा छाडी दउछन माने अपन सब समय से ज्योग्राफी एस्पेक्ट रे ही भाबिलेनी एटा भी ज्योग्राफी एस्पेक्ट ही किंतु अपन छाडी देलेनी समय से एस्पेक्ट The deforestation, climate change, global warming. deforestation very good Climate change and related like cloud burst and all. exactly cloud burst हेले कोन हबो बहुत वर्षा सेम टाइम हबो डाउनपोर हेवी डाउनपोर हेले कोन हबो it will erode the surface तो सेटुर कोन हबो आपनकर लैंडस्लाइड हबो आउ गोटे आपण जानिथिबे जो हिडन लेक्स थाए क्लाउड बर्स्ट हेले बहुत अधिका से हिडन लेक्स गुडा भी बोही आसे राइट माने हिडन लेक्स जो थाए ता सेटा को भी सिए इरोड कर दिए से हिडन लेक्स से तळे बाहर जो एका से बहुत पानी फ्लो हुए तळगु बहुत पानी तळगु फ्लो हबो से कोन हबो लैंडस्लाइड करै दबो राइट आउ कोन पॉइंट हबो सर हाइड्रो जदि पावर प्रोजेक्ट्स ओके जदि मु ज्योग्राफी क्लास न होइतांदा मु जानि सब पिला से पॉइंट्स गुडा आगो कहितांते Sir, ओके anthropogenic activity like एग्जैक्टली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज तो मु कहबी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज डायरेक्टली लिखिबे कारण एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी लिखले कोन हो कहले गोटे पॉइंट रे आपन सब पॉइंट लिखिए पड़ियो बुझ परछन मु कोन कहूची तो yes, sir, copyright एंथ्रोपोजेनिक like unscientific construction. yes unscientific constructions big dams such as construction of big dams आउ कोन Tunnels. okay tunnels roads infrastructure projects okay tunnels roads infrastructure projects unscientific or irresponsible tourism what a second developmental activities to cater to tourism such as hotel etc सब जिंस करा होची राइट सो दैट विल आल्सो लीड टू लैंडस्लाइड्स ठीक अछि तो मो कहया कथा कि ए पॉइंट गुडा बहुत कष्ट नय एबे आपण कोन ज्योग्राफी जेतबेले पढिले ज्योग्राफी जानले तो आपण ए जो दीटा पॉइंट मु कहूची फॉर एग्जांपल ए दीटा पॉइंट
एई दुटा पॉइंट बिना ज्योग्राफी पढ़ी की बाहर करिया कष्ट, राइट? तो एई दुटा पॉइंट आपण ज्योग्राफी क्लास रु जानले, बाकी पॉइंट तो आपण जानि छथि, हां स्टीप स्लोप अच्छी, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स अच्छी, डिफॉरेस्टेशन ए पॉइंट तो आपण सोई की भी राति रे कहि देबे, डिफॉरेस्टेशन डैम फॉर्म होची, रोड बनै पकोचंदी, टूरिस्ट अधिक आइ होची, राइट? ताप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ए पॉइंट भी आपण आराम से कहि परिबे, ठीक अछि। तो सेति पय मु कहूची जेतोल भी करचंदी पेस्टल अप्रोच रखिबे, किन सबु क्वेश्चन ज्योग्राफी रे पेस्टल अप्रोच रे हबनी। तो आपण जो पेस्टल अप्रोच रखुचंती, आपण देखो हां पेस्टल जदि किछ आसी गला भलो कथा, नहले कोन करिवे ज्योग्राफी रु ही पॉइंट काढे। फिजियोग्राफी रे कोन अछि, अच्छा फिजियोग्राफी रे हमर टेक्टोनिक टेक्टोनिकली एक्टिव स्टीप स्लोप, राइट? तापर आपण भाबिए कि अच्छा चलो ठीक अछि, एटा हला क्लाइमेट रो किछ प्रॉब्लम होउची कि, जेमति आपण कहले कि क्लाउड बर्स्ट होउची, ओके हां सेटा होउची, ग्लेशियल मेल्ट होउची, तो ताप ग्लेशियल मेल्ट पई भी कोन हबो, फ्लडिंग बढ़ी जिवो, फ्लडिंग बढ़ले लैंडस्लाइड हबो, राइट? तो सिमिलरली तापरे सर ज्योग्राफी रो स्नो गोटे थॉइंग पार्ट भी गोटे हे परियो पॉइंट, कोनटा हे परियो, स्नो थॉइंग। सुविधानी आउथरे सर स्नो थॉइंग, THAWING। अच्छा स्नो थॉइंग, ओके हां माने आपण जदी कहउछन ग्लेशियल मेल्ट या स्नो थॉइंग सेम थिंग, माने से गोटे पॉइंट ही ताको करि परियो, दीटा पॉइंट करि परियो, राइट? माने मु कहउची कि सेटा गोटे ही पॉइंट हबो, दीटा अलग अलग पॉइंट ताको करि कि स्नो yes sir, थॉइंग, understood, yes sir, understood. यस ओके। सो स्टीप हां जेमति स्टीप स्लोप जानले, तापरे आपण आसिले ओके एटा हे गला, तापरे हमर सरफेस जिंस आपण माने लैंड जिंस आपण देखिले, तापरे आपण देखि अच्छा चले नेक्स्ट कोन हमर फिजियोग्राफी रे रिवर्स अछि, तो रिवर्स रे कोन होउची ड्रेनेज सिस्टम, अच्छा रिवर्स बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर्स अछि, तापे प्रॉब्लम होउची, क्लाइमेट हे गला, फिजियोग्राफी हे गला, रिवर्स हे गला, राइट? तापरे आपण जिबे टुवर्ड्स अदर पार्ट्स ऑफ ज्योग्राफी लाइक सोशल रे, सोशल ज्योग्राफी जब जिबे अर्बनाइजेशन वगैरह से थरे आसीबो, राइट? तो अर्बनाइजेशन पई प्रॉब्लम, अच्छा टूरिज्म सेठी आपण माइंड रे आजो, अच्छा हां टूरिज्म होउची तापे कोन हबो, होटल बनाबो, होटल बने पे कोन करे डिफॉरेस्टेशन करिवे, राइट? तो से सब जिंस भी आसी जिवो, तो सेमती करी कि आपण भाबिले आराम से आपनकर पॉइंट बाहर जिवो। मु एया कहया चाहूची कि पॉइंट्स हमर घोसियार नै, हमकु जानियार अछि कि पॉइंट जनरेट कोड करे अछि, आ पॉइंट जनरेट कोड करे अछि सिलेबस क्लासिफिकेशन। ओके फाइन, so this was all about our northern mountains. ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ଲାସ କୁ extend କରିବି till 8:45, ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛି? Do you have any problem with it? No sir, no problem. Okay fine. Okay, so next topic is the northern plains. ଆମର ଏଇଟା ସରିଗଲା mountains. Next we'll be discussing about the northern plains. Okay, so the northern plains, as you can see here, it is divided into the Rajasthan plains, the Satluj Yamuna plain, or the Punjab Haryana plains, as you like to call it. Then the Ganga plain. जो गंगा प्लेन अछि ताकू डिवाइड करा तीनटा पार्ट, द अपर गंगा, द मिडिल गंगा एंड द लोअर गंगा प्लेन, ओके? एंड आफ्टर दैट यू हैव योर ब्रह्मपुत्र प्लेन। सो जते आपण फिजियोग्राफी लिखिबे, ओके, जदी खाली फिजियोग्राफी देला इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू इंक्लूड एवरीथिंग, सो मोस्ट प्रोबेबली दे विल नॉट आस्क सच अ क्वेश्चन। जदी सेमता क्वेश्चन पचारले आपण कोन करिवे कि नॉर्दर्न माउंटेन लिखिले क्लासिफिकेशन साइड रे खाली गोटे गोटे पॉइंट लिखि कि आगु बढ़े, राइट? बिकॉज़ यू हैव टू कवर एवरीथिंग। तो बट जदी खाली नॉर्दर्न माउंटेन पचारला सेठी आपण को टिके भलो की चांस मिली जिवो आउ किछि किछि जिंस देखिया पई। सिमिलरली जदी आपण को भाबंतु खाली ग्रेट प्लेन्स पचारला, ठीक अछि, तो आपण को सेठी भी ए क्लासिफिकेशन आपण देई परिवे, राइट? सो गोटे मैप ड्रा करिवे, ऑब्वियसली ज्योग्राफी रे आपण पाखरे देखंतु अलगा जगह रे कोन हुए, जनरली हमको टिके भाबिया को पड़ा छै कोन मैप, जदी आगु आपण प्रैक्टिस करि नांदी कि एठी कोन मैप कर परिबे, एठी कोन मैप कर परिबे, किंतु ज्योग्राफी रे गोटे भलो जिंस हला बहुत इजीली आपण मैप कर देई पारे, राइट? तो से जिंसटा आपण एठी कर देई परिबे। तो ग्रेट प्लेन्स रे फर्स्ट
आमे राजस्थान प्लेन डिस्कस करिया ता आगुरु किछि छोटो जिंस हम कहबी प्लेन कोन व्हाट इज अ प्लेन सर जार एलिवेशन सेम कांस्टेंट था ओके फाइन हां माने प्लेन ता किछु नै गोटे फीचरलेस लोलैंड राइट माने सेठी किछि फीचर नथिबो जेमते हमें माउंटेन से देखुछि इट इज एन elevated landscape right but here northern plain टा कोन गोटे फीचरलेस lowland आपण कहि परिबे राइट आउ हमर जो ग्रेट प्लेन फॉर्म हेची जो ग्रेट प्लेन फॉर्म हेची इट इज फॉर्म्ड by three rivers it is formed by mainly three rivers that is the Indus the Ganga and the Brahmaputra right these three rivers have led to formation of the great plains that we find in India okay and it is one of the largest माने ये जो तीनटा rivers जो form करवंती plains it is the largest alluvial tract of the world ठीक अछि it is somewhat around 3200 kilometers किंतु एटा इंडिया रे टोटली नुह कारण इंडस आपण जानते पाकिस्तान को जाउची ब्रह्मपुत्र and Ganga they flow to Bangladesh also so total 3200 but India रे आपण 2400 kilometers रो alluvial tract एटा form करंदी right so जो ग्रेट प्लेन अछि तारो दीटा मु जियोमॉर्फोलॉजी डिवीजन आपन को कहबी ओके दैट इज जस्ट अ सेकंड भब्बर जोन व्हाट इज अ भब्बर जोन sir I think it's the first phase where the sedimentation not deposition by the deposition of the sediment starts by the Sir, it river. is the old alluvial plain. No, Bhabbar is not. That is Bhangar. And the old alluvial plain is known as Bhangar. Okay, so Bhabbar टा कोन it is सर ये सेडिमेंट्स गुड़ा को टिके माने लार्जर फॉर्म रे थांदी जेमति कोबल्स से टाइप रो okay so yes yes नहीं सेटा कोर्स सेडिमेंट्स इज भांगर जोटा कि ओल्ड एलुवियम रे भब्बर रे हां सेडिमेंट्स ही एटा किंतु एटा कोन ए जो सेडिमेंट्स थाए एटा जनरली आपनकर जो लेट्स से दिस इज अ माउंटेन लेट्स से दिस इज अ माउंटेन एंड दिस इज योर प्लेन तो जेतले माउंटेन रिवर फ्लो हबो सीए ता संगे बहुत गुडे लोड कैरी करी के आसे राइट ता संगे से बहुत गुडे लोड कैरी करी के आसीबो एंड एज इट रीचेस द प्लेन तो फर्स्ट कोन करिवो तारो as the speed कमी जीवो so it cannot carry the load further तो बड़ बड़ लोड्स कि बड़ बड़ बोल्डर्स से कोन करिवो एई पाखरे डिपॉजिट करिवो राइट एई पाखरे बड़ बड़ बोल्डर्स डिपॉजिट कर दबो राइट तो जेतले एई फुट हिल्स रे जस्ट फुट हिल्स पाखरे जो बड़ बड़ बोल्डर्स डिपॉजिट करिवो तो आपण आ गुटे जिंस भी जानिबे जदि छोट छोट पार्टिकल्स भाबंत एठी हम छोट छोट पार्टिकल्स पाखे पाखरे अछि तो आर पोरोसिटी बहुत कम रहिवो किन जदि भाबंत बड़ बड़ पार्टिकल्स पाखरे पाखरे अछि आपण एठी देखि परथिबे ए जो गैप गुडा एटा बेसी बड़ रहउची राइट तो पोरोसिटी एठी बेसी बड़ रहइबो माने अधिक रहइबो राइट सो व्हाट हैपेंस व्हेन दिस रिवर कम टू द फुट हिल्स they deposit this boulders and big sediments that they bring with them right so आर कोन पोरोसिटी अधिका थाए सेति पई एठी कोन हबो रिवर टा कोन करिवो शिप करि जिवो अंक तळे माने एटा पोरस तो रिवर टा कोन करिवो एठी शिप कर दियो सरफेस रे आपन को रिवर देखा जिवो सरफेस टा आपन को बहुत ड्राई देखा जिवो एठी ओके प्लेन रे फर्स्ट पार्ट रे आपन सरफेस टा एठी बहुत ड्राई देखा जिवो ता रिवर कोन होची रिवर आपनकर जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट है ता तळे जाउची ओके तो एई पार्ट टाकू आमे कोन को भाबर जोन ठीक अछि एई पार्ट टाकू आमे भाबर जोन को किन ता पर पार्ट जेतोले रिवर री इमर्ज करिवो एठी बड़ बोल्डर्स एठी आसला तापर छोट सेडिमेंट्स पकेई चलिवो एठी राइट रिलेटिवली आउ छोट सेडिमेंट एठी पकेइबो तापर पूरा फाइन सेडिमेंट्स याड
କରୁଛି ओके तो एठी जेतले री इमर्ज करिवो रिवर तो हठात तो एमती बाहर को बाहरी आसीबनी ना धीरे 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 री इमर्ज करिवो राइट कारण आउ टिके छोटो सेडिमेंट आउ टिके छोटो सेडिमेंट आउ टिके छोटो सेडिमेंट एमती अरेंज हेकी थिबे राइट सो एठी जो आउ टिके टिके छोटो छोटो सेडिमेंट्स थिबो एठी रिवर कोन करिवो जेतले इमर्ज करिवो एठी हठात इमर्ज करिवनी तो ए जगारे कौन हम आपणकर टिके लैंड टा टिके मार्सी रहिबो मार्सी इन द सेंस भाबंतु टिके कादुआ रहिबो जोठी जेमती आपणकर भाबंतु जोठी पोखरी जदि आपण देखिथिबे जोठी बहुत गछ गछ उठी जायता धीरे धीरे दଳ जोटा को कहते तो सेही भलिया इटी टिके मार्सी रहिबो लैंड आउ से जोन टा को हमें को तराई रीजन ओके फर्स्ट जोठी आसी की रिवर फर्स्ट डिसेंड करूची डिपोजिट करूची सेठी हमर कोन होउची भबर जोन रहउची ता नेक्स्ट जोन टा हमर कोन होउची जोठी रिवर धीरे धीरे री इमर्ज करची हम से पार्ट टा को हम कोन कहउचे दैट इज योर तराई रीजन ओके अंडरस्टूड एवरीवन this two terms Yes, sir. Yes, sir. okay okay how did a term discuss kariya that is bhangar as someone said what is bhangar is nothing but old sediments old alluvium deposits old alluvium deposits are known as bhangar for example let's say this is a plain okay this is a plain and the river was flowing river is now the river is flowing from this region okay this valley river is flowing from this valley okay किंतु गोटे जिन आप जानी पार्थिबे कि रिवर जो आपण माने एंटीसीडेंट रिवर एथरा हम डिस्कस करछन माने डिस्कस करने आसी जी टॉपिक बेले तो एंटीसीडेंट रिवर सन कोन करंती दे कट थ्रू द माउंटेन्स राइट दे कट थ्रू द माउंटेन्स तो गोटे जिन आप जानी पार्थिबे कि आगुरु ए जो वैली सॉरी आगुरु ए वैलीटा नथिबो आगुरु ए वैलीटा नथिबो ओके आगुरु कोन थिबो आगुरु कोन थिबो एटा एमती थिबो ओके एमती थिबो एंड the river must have flown from this part धीरे धीरे रिवर कोन करिवो ए पार्ट टाको इरोड करी ए पार्ट टाको कोन करिवो जेमती हमें को खाई दबो ओके रिवर कोन करिवो इट विल इरोड दिस पार्ट एंड it will create another valley it will cut deep and vertical river कोन करिवो vertically erode करिवो vertically erode करिकी कोन करिवो ओके तो आगुरु कोन थिला मु कहली कि आगुरु रिवर टा ए प्लेन लेट्स से दिस इज प्लेन ए दिस इज प्लेन बी ओके रिवर ए प्लेन रे फ्लो करथला रिवर टा ए प्लेन रे फ्लो करथला ओके बट नाउ इट हैज cut this plane it has cut this plane and it is flowing in this part एबे ए पार्ट रे फ्लो करछि ओके आगुरु एठी फ्लो करथला सेटा को कोन कला से काटी की डीप काटी काटी एबे ए जाय पड़ला ता फर्स्ट से कोडी फ्लो करथिबो रिवरटा फर्स्ट एठी फ्लो करथिबो ए रीजन रे फ्लो करथिबो आकु काटिथिबो तापर कोन करथिबो ता तळ रीजन रे फ्लो कला ताकु काटिला एठी फ्लो कला राइट तो एबे गोटे जिंस मते कोहंदु कि जत्तो बेले रिवर जतले एठी काटी सारलानी तो रिवर एठी काटी के एठी के आसीला ता आगुरु एठी फ्लो करथला तले एठी फ्लो करथला माने ए रे तले फ्लो करथला जतले रिवर रे फ्लडिंग हेइथिबो जतले रिवर रे फ्लडिंग हेइथिबो रिवर कोन करथिबो रिवर एठी सेडिमेंट्स डिपॉजिट करथिबो यस और नो जतले रिवरटा एठी फ्लो करथला एटा ता बैंक Yes. एटा ता बैंक जतले रिवर ता बैंक को ब्रीच कला फ्लड हे गला रिवर कैरी करि पारलानी सेति की पानी जति करी जति ता कैपेसिटी ताटो अधिका पानी जतो रिवर रे आसला रिवर फ्लड हेतिबो तो फ्लड हेले सेडिमेंट्स ता बैंक रे एठी डिपॉजिट करथिबो यस और नो Yes, sir. Yes, sir. ता आगुरु जेतले रिवर एठी फ्लो करथिला जेतले रिवर एठी फ्लो करथिला सेतबेले जेतले फ्लडिंग हेतिबो रिवर कोठी डिपॉजिट करथिबो इट वुड हैव डिपॉजिटेड द सेडिमेंट्स हियर
आगो एठी फ्लो करथला, लेट्स से ए एरिया रे फ्लो करथला, ए एरिया रे फ्लो करथला, आकु फर्दर काटी के तळ एरिया को आसी, लेट्स से दिस इज सी, लेट्स से दिस इज सी, ओके ए प्लेन रे तळ फ्लो करथला, तो रिवर कोन करथिबो, जे तळ फ्लड हेतिबो रिवर आसी की सेडिमेंट्स तारो डिपोजिट एठी करथिबो, राइट, किंतु एबे रिवर एठी फ्लो करथि, ता माने आगुरु रिवर एठी फ्लो करथला, तळे सेडिमेंट्स एठी डिपोजिट करथला, दिस इज योर ओल्ड एलुवियम, this is your old alluvium and that is known as your bhangar, au this is your new alluvium and that is known as your khadar. Clear? ei part ta clear hegala apanଙ୍କର bhangar and khadar? Yes, sir. Okay, so this are some terms, ଯେମିତି ଭାबर जोन, ଆପଣ ପ୍ଲେन ଲେଖିବେ ଭାबर जोन ଲେଖିବେ, ଖାଦର जोन ଲେଖିବେ कि it is divided into various part, गोटे भाबर गोटे तराई region, the plain is divided into भाबर zone, tarai zone and the alluvium tracts, and the alluvium tracts are further divided into the bhabar zone and the khadar zone. What is bhabar zone, sorry, bhangar zone and the khadar zone? Bhangar zone is the old alluvium and khadar zone is the new alluvium. जदि आपन को चांस मिलिला लिखिया पे आपन एटा लिखबे, it would be depend upon the question and the marks it carries. Okay, तापरे next we'll be discussing now the classification of the northern plains. Okay, regional division देखिया northern plains रो. Okay, so northern plains सेतल हम देखेली कि first राजस्थान प्लेन, then पंजाब हरियाणा और sorry, the Rajasthan plain, the Punjab Haryana plain, the Ganga plain and the Brahmaputra plain, right? Let's first discuss the Rajasthan plain. So the Rajasthan plain lies west to the Aravalli. Okay, the Rajasthan plain lies west to the Aravalli. Okay, e region da dekhandu, e region da, this is your Rajasthan plain. Okay, and this plain consists of majorly two parts. First part hela apanଙ୍କର this zone that is known as the, iti apanko maybe pura dekha jaw nathiba clearly, this is the Marusthali. Okay, this is the Marusthali zone. Okay, or also known as the Great Indian Desert. Okay, Marusthali zone or the Great Indian Desert. Okay, and obviously we know that this is a very dry region. Okay, not suitable for crops, ame e sabu jinsa janiche. এই রিজন रो गोटे स्पेसिफिक फीचर कोन, ए रीजन रो गोटे स्पेसिफिक फीचर हला, it has sand dunes, it has sand dunes. What is sand dunes? Nothing but a heap of sand or a mound of sand. ठीक अछि, ए रीजन रे आपन को बहुत अधिका sand dunes देखिया को मिले, and it is locally known as धरियाल, local name. Okay, it is locally known as धरियाल. Then the eastern part of the Rajasthan plain is known as the Rajasthan Baggar. Okay, e part ta, this is the second part, and this part is known as your Rajasthan Baggar. Okay, this part is known as Rajasthan Baggar, and this part is semi-arid. Eta pura arid. E part ta, this part is totally arid. Okay, sand dunes, and this is totally arid, but this part is semi-arid. Rajasthan Baggar is semi-arid. Why semi-arid? Because you have some seasonal rivers flowing here. Okay, such as Luni, Sabarmati. एमाने कोन आरावली रो फुटहिल्स रु फ्लो करंती, ठीक अछि, आउ एठी सीजनली साने फ्लो करंती. So that's why this part is semi arid and not completely arid. Okay, and hence as this part is semi arid and the river is flowing here, so this part has patches of land
patches of land which is suitable for agriculture. Suitable for agriculture. Okay, and those fertile tracts are locally known as rohi. Rohi macho no. Rohi is the semi-arid patch of land that is found in this region. Okay, so those patches are known as rohi. Okay, so this is this land can be used for agricultural for growing crops. Okay, this part can be used for growing crops as you have some seasonal rivers flowing here. And it is sediments achi. The sediments that here found here are coarse sediments. Okay, coarse sediments. Can anyone tell me why in this region we have coarse sediments and not fine sediments? The lack of rivers. Yes, दीटा रीजन गोटे हला कि रिवर्स जोड़ा सेटा फर्स्ट सीजनल तो दे से माने जो सेडिमेंट्स अछि ताकू कंटिन्यूअसली तांका संगे फ्लो करि पारिन कंटिन्यूअसली फ्लो हले कोन होबो से माने सेडिमेंट्स गुडा ब्रेक हेबे ड्रैग हले ब्रेक हेबे छोटो हेबे आउ शॉर्ट फ्लोइंग रिवर्स ठीक अछि हिमालयन रिवर्स आर वेरी लॉन्ग फ्लोइंग रिवर्स सेन बहुत ऊपर आछुचंदी एंड सेडिमेंट्स जतो तांका संगे नेकी आछुचंदी ताकू बाटरे बाड़ी बुड़े भांगी भुंगी धरिकी तळुको आछुचंदी जेतळे तळुको आछुचंदी सेतळु से सेडिमेंट्स रा कुछ रहउनी okay fine sediments but here the rivers are very short flowing rivers hence you have coarse sediments fine ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କି this region have some saline lakes. Okay, this region have some saline lakes. Okay, and they are known as playa lakes. This region have some saline lakes also called as playa lakes. एठी आपनको किछि lakes मिलिबो and ई जो playa lakes कोन हुए जेतबेले रेनफॉल नथिबो कि in peak summers these lakes the water of the lake get evaporated and salt is obtained from these lakes. Okay, water is evaporated and salts are obtained from this lake. Okay, clear everyone? Rajasthan plains. Doubt ଅଛି କିଛି? No, sir. Okay, fine. After the Rajasthan plain, we'll be discussing the Punjab Haryana plain. Okay. Okay. So this is your Punjab Haryana plain. Okay, जो Punjab Haryana plain अछि, it has its border with Yamuna river. ठीक अछि आपनकर तारो ईस्ट जो ईस्टर्न बाउंड्री अछि जस्ट अ सेकंड जो ईस्टर्न बाउंड्री अछि यू नो दैट यमुना फ्लोज इन हरियाणा ठीक अछि तार जो ईस्टर्न बाउंड्री अछि सेठी कोन होछि तारो जो बाउंड्री रहइबो एठी यमुना संगरे तारो ईस्टर्न बाउंड्री रहइबो ओके आउ सेपटे ऑब्वियसली पाकिस्तान रहिबो बाउंड्री ए प्लेन रे ठीक अछि आउ सर्दर्न पार्ट रे हमरो राजस्थान प्लेन्स आरो बॉर्डर रहिबो ए पार्ट रे राजस्थान प्लेन्स आ बॉर्डर रहिबो सो जदि आपण प्लेन्स लिखुछ त आपण लिखि परिबे कि साउथ ऑफ यमुना it has its border with Yamuna river on its east, the northwest frontier province on the west, and the Rajasthan plains to its southwest. Okay, you can write that. Then you can also write that this plain is formed by 5 rivers. अच्छा पंजाब रो ना केमती आछि के कहि परिबे Panchanad, okay the five tributaries of Indus. okay द्वाब जानि जंती कोन द्वाब Yes, between two rivers. Two
River. Yes, between two Plain rivers. between two rivers. A plain or a land between two rivers द्वार. So ab means a river. So Punjab, okay, this has come from 5 rivers. ठीक আছে, 5টা river ru na আসছে Punjab, and this plain has been formed by 5 rivers. What are those rivers? Those rivers are your Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Bias, Satluj. It means Indus and its tributary. Okay, Indus and its tributary. These are the 5 rivers, and the main river is the Indus. Okay, so amar jo these are the 5 rivers. Okay, the Punjab wala, and the main river is the Indus. So amar jo Punjab Haryana plain achi, jo Punjab Haryana plain achi, it is further divided into many plains. Okay, further divided into 5 more plains. Okay, so what are those plains? First is Beast Dwab. Okay, it dekhantu Beast Dwab. The name is the Beast Dwab. What is Beast Dwab? Nada kothuru aschi? See here, Bias, Satluj. Bias and Satluj. Okay, तो सेथुरु बीस द्वाब बहुत सहज मन रखे एथरे किछि कष्ट भी नाही. तापरे आसी गला आपनको बारी द्वाब. व्हाट इज बारी? ब्याज एंड रवि. तापरे रचना, केते जगह रचना भी लिखा हुए, जोटा भी लिखिबे चलिबो. तो रचना एटा कोठु आसला? इजी अगेन, रवि एंड चेनाब. तापरे आपनकर जेज, केते जगह छेज भी लिखा है था. ओके, सेटा कोठु आसला? फ्रॉम चेनाब, सॉरी, from Chenab and Jhelum. Okay, and the Sindh Sagar Dwab, that is formed between the Indus River and the Jhelum River. So the Punjab Haryana plains, tar boundary likhi debe, tapre likhibe it is further divided into 5 plains based on the rivers. Okay, based on the rivers that is flowing through that plain. ठीक अछि, तो सेटा कोन होई जबो अपरे ना लिखि देबे से रिवर्स रो, and it is very easy to remember. Beast, Bari, this is Rachna, Jhelum और चेनाब वेगला चेज. ओके, और जेज, एटी जेज लिखा है, चेज भी हुए, छज हुए, and the Sindh Sagar Dwab between Indus and Jhelum. Okay, so this is your Punjab Dwab, and in sorry, this is your Punjab plains, and in the Punjab Haryana plains, जो पंजाब हरियाणा प्लेन अछि, एठी जो खादर अछि, that is the new alluvium. Okay, it is known as, locally it is known as bet or betland. Okay, locally it is known as betland. Okay, clear everyone? Punjab Haryana plains. Yes, sir. Okay, do you have patience to continue for another 15 minutes? If you do not have, you can tell outrightly, nice sir, how high pariyoni, overloaded hai galani. But if you have, we can continue for another 15 minutes. If you have patience. Aji thao, sir. Aji thao. Okay, ठीक अछि. Okay, fine. So that was all for today's class. Kali aji first class thila to starting में आपन को कुछ पढ़िए. तो tomorrow will be completing physiography, as well as we will start रिवर्स सिस्टम रो बहुत छोटो पार्ट कहबी. माने पूरा बसी रिवर्स पढ़, कारण इट इज ऑफ नो यूज. कारण को रिवर कोड फ्लो होला कोन होला सेटा आपन प्रिलिम्स रो पार्ट. मेंस रो पार्ट जहा थिबो गोटे दिटा क्वेश्चन थ्रू रे मु सेटा को कंप्लीट करई देबी, एंड तापरे विल मूव टू द क्लाइमेट पार्ट. ओके, विल मूव टू द क्लाइमेट पार्ट. काली एटा सारी की मु क्लाइमेट स्टार्ट करबी. ओके, फाइन एवरीवन. Before leaving, just tell me if you are finding any problem, or if you are facing any problem in the class. किछि नाही ए जिंसटा problem लागुची कि सेटा problem लागुची कि fast होउची कि slow होउची, जा भी होउची.
ଯଦି ସ୍ଲୋ ହଉଛି କହିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବି, ତା ମତେ ଫାଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ବଟ୍ obviously ଟପିକ ବୁଝା ଯିବାଟା ଆଗ ଦରକାର। Any feedback for that? ନାଇଁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଜିନିଷ ବୁଝା ଯାଉଛି? ହଁ sir. ହଁ Yes, sir। sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So next class is tomorrow. We'll be meeting at sharp 6 o'clock, and I will be giving 2 questions today regarding what we have studied. So just write those questions. Okay? ଆଉ ଲେଖିବାଠୁ ଆଗ ମୁଁ କହିବି ଭାବିବେ, ଠିକ ଅଛି? ଭାବିବାଟା ବହୁତ ଦରକାର, କାରଣ ଏକ୍ସାମରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ବହୁତ ଥର ଆପଣ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯିବେ, ଆସିବ, ବିକଜ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟିଂ 6 hours in a day and it is not easy at all. ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର ବେଳକୁ ଚଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ତ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ଷ୍ଟରେ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର ବେଳକୁ କଣ ହୁଏ ନା ମାଇଣ୍ଡ ବି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସୋ ସେତେବେଳେ କଣ କାମ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ ପଢିଛନ୍ତି କଣ ଘୋଷିଛନ୍ତି କାମ ଆସିବନି। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆସିବ କି ଆପଣ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏକ୍ସାମ ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଓକେ, କେତେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଖଟେଇଛନ୍ତି, ଓକେ, କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି କନସେପ୍ଟ ସେଠି କଣ ହବ କହିଲେ ଘୋଷିଛନ୍ତି ଯାହା ଆସିବନି, ସେତେବେଳେ ଯାହା ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବାହାରିବ। ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଓକେ, ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆପଣ ବ୍ରେନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଟୁ ଗେଟ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଅ ପ୍ରପର ଆନ୍ସର, ଠିକ ଅଛି? ତ ସେ ଜିନିଷ କରିବେ। ମୁଁ ଯାହା ବି 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି କୋଉଠି ଦେଖିବେନି, କାରଣ ଯାହା ପଢେଇଛି ସେଥିରୁ ଦେବି। ମୋ ହିସାବରେ କୋଉଠୁ ନ ଦେଖିକି ଭାବିକି ଲେଖିବେ, ସିଲାବସ ର ପଏଣ୍ଟସ ଦେଖିବେ ସବୁ, पेस्टल अप्रोच रे भी जहाँ जहाँ पॉइंट हे परिवो सेटा भाबिए, एज वेल एज ज्योग्राफी रो जो क्लासिफाइड सिलेबस ता थ्रू भाबी के लिखिबे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आई विल बी एंडिंग द क्लास हियर। Thank you, sir. ओके, गुड नाइट एवरीवन।